like Sharjeel, Khurram Manzoor, Azam Khan from Sindh, Balochistan getting Imam ul Haq back. We'll get some big scores going. Got Wasim Akram alongside me, and the two sides in front of us. Yeah, no change as far as Sindh concerned. Same team they played yesterday. And Balochistan, one change. Imam ul Haq comes in for Imran Butt. So both the teams, Sindh is sitting at number 4 on the table with 4 points. This is their 7th game. And Balochistan at number 2 with 8 points. So big game for both the sides, of course, but Sindh, most importantly, they need to win this game to be in the race for the qualifiers. Awazia played brilliant knock in the previous game. He's got 92, not out, played some exceptional shots in his innings. A left-hander, pulls well, cuts well, back foot player. Third game in a row for Sindh. Like I said, they have some cricketers who are very experienced. They probably will be a bit stiff, Sikandar, I reckon, in my opinion. Asked Faraz about that, and he was like, "You know how it is." I didn't know. but how it is, please tell me. Yeah, that's why I asked. But yes, there will be some tired legs out there, because T20 takes the most out of you. The shorter the format, more energy comes out of you. Usually people think it's only 20-over game, each bowler has to bowl 4 overs, but it's high intensity. Every ball you have to concentrate, even if you're fielding at short fine leg. You can't relax. In test cricket you can go to fine leg and kind of relax a bit, but in this format you don't have time, so everything has to be fast paced, always under the pump. This is the beauty of T20 cricket. You need a lot more fitness, I reckon, in this format. Physical fitness. Sohail Khan will take the new ball. He's got one slip, third man up in the circle, Feinig up in the circle. He's got point, backward point on the boundary, and square leg just in front of the leg umpire. So yeah, first ball. Nicely done, beautiful shot, and it's a boundary to start off with. So that first delivery showed Sohail Khan definitely was a bit stiff, and he had a fielder back there at backward point, but what a shot from Imam ul Haq. Look at this, beautifully timed shot, raced away to the boundary. First ball, first boundary. Good thing for Balochistan, both their openers have won Man of the Match awards in this tournament up till now. Imam in Multan, and last night it was Awazia. So if you've got your openers who've won you games, you're surely looking for a good start here. We're also looking for some brisk starts in the power play. Good call, that. We'll just quickly run through because 4 overs go so quickly. The weak links that we've seen up till now, if you focus on Sindh, they're fielding. There's been a question mark on that, and then of course they've been a bit wayward in their bowling. Balochistan on the other hand have had good games. They've got results in their favour, but they still want more from their middle order. So new batsman facing Awazia, first ball, and fielder at mid-off and mid-on, they're coming from the circle. It means they're giving the single away straight away. Better length. He's bowling according to his field, and he was away swinger to the left-hander. You can see the wrist, use of the wrist from Sohail Khan, close to the stumps, then slanting the ball across the left-hander. Two different brands of cricket with these two batsmen. Awazia relies more on power. Imam ul Haq is more of a timer. He likes to use his feet more than Owais does. Attacking batsmen both. Back to your point. Singles in the circle because they're right at the edge. You play soft hands and you can easily scamper for one. Boundary on the first ball, single, dot ball, single. We haven't seen any swing, just one delivery that went across the left-hander Awazia.
Second time in the over, he leaves the left-hander's bat. Good carry, I must say. Obviously, he's warmed up. And he's learned that delivery. It's so important at this level to learn the swing both ways. He pitched and then went across. Good wicket, I must say. Good T20 pitch. If you're a good batsman with good technique, you can get runs on it. But so far, we haven't seen any today, in fact. 6 runs from the over, 2 dot balls. So, good start. This is a very important delivery for any bowler, last ball of his over in this format. Nice wrist work. Will they come back for 2? No. 1 is what they settle with. End of the over. It's 7 for none. Going back to match 19, which was just played, we were talking about it earlier. 29 in the power play from the bat side batting first, 25 odd by second, and that's what Shan Masood said in the presentation as well, that they did not play the power play well. The start wasn't good, so they lag behind and they fall short by 5 runs on a low-scoring game. That's where the mindset has to be changed in Pakistan cricket. I can understand you're chasing 140. The mindset probably would be, okay, if you play 20 overs, we'll get those runs. Yes, you would. But the mindset should have been, okay, we're going to play positive cricket. We're going to try to win this game in 16 overs. And obviously for that, the aim should be get 40, 45 in first 6 overs. Imagine getting 45 in first 6 overs. Even if you lose 1 or 2 wickets, you'll be requiring almost run a ball after that. Less pressure on you. Yeah, so you'll always be of the opinion that if you're sending in your opener, you're giving him a certain goal to achieve. We'll talk about that after this delivery. You're sort of giving him a license that you go out there, hit, and if you get out, I don't mind it, but you got to achieve us a certain target. I'm not saying go out and slog. I'm saying go out with a positive frame of mind and try to play positive cricket. If it's go on a front foot, try to play on the up, try to play cricketing shots along the ground. Don't just block, and after 3 deliveries try to hit one out of the park. Which is why we saw earlier, for example, Khurram Manzoor played almost all 20 overs, scored 65 and ended up on the losing side. Good delivery, bit of pace. Nipped back to the left-hander. Bit of extra bounce from young Hasnan. Beautiful action. This is an ideal length in this format. Obviously, you can't bowl 6 deliveries there. But this is the back of a length I talk about all the time. Back of a length, finishing into the stumps. For that you need control. For that you need to practice a lot. Not quite onto the bat, but it'll earn him a single. In the match before, where Northern beat their opposition, Southern Punjab, by 5 runs, they've qualified for the semis with good enough points. Southern Punjab still not out of the equation. They need to win their remaining games for sure and probably hope for a team or two to lose their games. Played very important innings yesterday.
32 under pressure. Azam Khan fielding at short fine leg. He's a keeper. Obviously, with Sarfaraz being the skipper and a keeper, he is not keeping. But if I was him, I would have gone up to my captain and I would have told him, can you please put me in a place where the ball is going to come to me every time, not at short fine leg. It's an easy option out. Edge, one bounce straight to Sohail Khan, a third man. End of the over. 2 overs gone, 11 for none. Eleven for none in 2. Coming back to the point I was making earlier on about youngsters, Azam Khan, in fact, I was talking about fielding at short fine leg, because he knows he's not going to get to the side as a keeper batsman. He's purely playing as a batsman, and a very talented one too, no doubt. But fielding is all about the will that you want to be there at the positions where ball is coming a lot more. Now he's at short third man. Obviously, you don't have to run there. You just have to stand at the circle, and ball will come to you. You don't take, you take a couple of steps and just stand, because third man, short fine leg, there's not much of a fielding there. Beautifully bowled again. That's good bowling from experienced Sohail Khan. Yeah, they're two different kinds of players. One who love fielding and one who just are there because there's no other option. But your point is right. Put me in the line of fire. I want to improve myself, or I want to be a part of this. I want to save a few runs. And I've noticed on more than one occasion, the more you try to avoid the ball, it follows you. Every time. Every time. And especially if you're having a bad day, and especially if you're scared that if I'll drop a catch, you will definitely drop it. This is really class bowling from Sohail Khan. Very impressive. Playing his third game in a row. And it happens on so many occasions that, you might be standing in a T20 or an ODI and the ball just doesn't come to you. You're sitting and thinking the ball is not coming to you at all, but it will just come once, and that will be the changing moment. Probably a catch, a quick one. What a rare chance. This is unplayable. It's really a good pitch. If you're a good bowler, if you can seam the ball, swing the ball, you can trouble the batsman with the new ball. Credit to the groundsman. It's a beautifully laid out pitch. Bit of grass on there, nicely rolled in. It's hard as well, so hence the good, hence the bounce, extra bounce they're getting with the new ball. It's not a difficult pitch to bat on. The way the batsmen are batting on this pitch, slightly seam around, they looked out of sorts, but over and all, a very good cricketing pitch. Would you get another slip in? Or you'd be happy seeing the ball passing the outside edge? I think right now he's bowled 5 deliveries. There's no point risking it now. It's the last ball of the third over. But look at this delivery. Missed it completely. He was playing across the line. He thought it'll be an in-swing. He was aiming towards mid-wicket and missed it completely. This is the last ball. No point having an extra slip. But if it's seaming around, especially Hasnan is bowling, the pace he's bowling, just have 2 slips of first 2 deliveries. Take a risk, because you probably will get a wicket or 2.
There's the third man we've been talking about. Well done. End of the over. It's 12 for none. "12 for none, Balochistan in 3. What a spell from Sohail Khan. 2 overs, 8 runs. I mean, in 18 deliveries so far, there are 10 dot balls, and Imamul Haq is on 7 of 12. 8 dot balls. Change of bowling. Mir Hamza. He can trouble the batsman. No slip. Ball is seaming around a bit. Well bowled, well played. Talented bowler Mir Hamza. I've been seeing him since the PSL 1. He hasn't improved the ranks. In the previous game he went for 49 in his 4 overs. With 300 first class wickets. He's 28. I thought he's 22 because I remember him since I saw him first time. Full delivery, beautiful shot and a misfield. Are they going to come back for 2 or is the ball going to race to the boundary? No. They're going to settle for 2. Another first misfield from Sindh. These are the extra 10-15 runs that Sindh is leaking in the games we've seen. Now, under no circumstances, this should have been 2. It looks like Anwar Ali is the fielder here. Yeah, it is Anwar Ali. He's one of the best fielders in Sindh side, no doubt. Good effort in the end, but missed the ball. Saved 2 runs for sure. There's some injury occurred there, I think. Isn't it a safer option we were talking about yesterday? How you see the other teams and internationals slide legs in first, bring your body behind it rather than swimming pool dive. It depends on the pitch, on the ground itself. Our grounds are rock hard. Sometimes you slide to slide. You just put your knee right into the ground and you don't slide. So that's why they are scared, and rightly so. If you play overseas in England, Australia, New Zealand, you slide, it means you're going to, it'll be 100%. Now here, when he tries to get to the ball, it just gets that odd bounce. Now, where does he get hurt? Is it his shoulder? Oh, all right, that's the shoulder of his. Yeah, I think he stretched it there. He was in a flow. Big blow for Sindh here, one of the main players. The 4 overs he had to bowl, and he's out with a shoulder injury. Hope he's okay for his sake and for his team's sake. Maybe a bit of icing. He's a bit of a fighter. He's a tough guy. Or a magic spray. You better bowl him the quick overs. Mind you, they only have 5 regular bowlers. Anwar Ali, obviously he's just got injured. Then they have Hassan Khan, the left arm spinner, Sohail Khan, Mir Hamza and Mohammad Hasnain. Okay, Asad Shafi can give you 1 over maybe. Maybe on a good day 2. That's a good ball. It shapes away. This is the length we talk about. Danish Aziz can give you 1 or 2 overs as well, but that's a big worry for Sindh team. Beautiful delivery from Mir Hamza. Close to the stumps. Going away from the left-hander. Didn't carry. A very steady start, I suppose. Slow start. Cautious start from Balochistan. 15 for none in 3.3.
They're taking the sweet time, changing the field, no rush whatsoever, not a problem. Slip in place now. Sharjeel. That's the charge he likes to give, but then the ball is shaping away, so he's nowhere near the line. Because it was premeditated, it was pre-planned. If this ball, I gotta go. And I was telling Mazhar and you off the record, off the mics, that that's his go-to shot. As a bowler, even I know if you bowl a couple of dot balls, he's gonna charge. Look at the seam, beautiful seam position as well. Good action, smooth action from Mir Hamza. Good follow through. Pushes hard at it, gets a single. It was hit hard straight to Khurram Manzoor. They still managed to scamper for one. As an opposition, as a batsman, you pick your fielders. That okay, this fielder, if it goes straight to him, I'm taking a single. And Khurram Manzoor, I suppose, is one of them. Nice big gap on the onside, but the way Mir Hamza is bowling, that part is secure even if it's unmanned. That's in the air. That's a frustration from a batsman. Will take some catching. No, Sindh's problems continue. That should have been taken. Danish Aziz was the fielder who's dropped it. So there we go, 17 for none. दानिश अजीज़ ने बहुत आसान कैच गिराया, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ सिंध के लिए और शायद आखिरी बार भी नहीं हुआ होगा जिस तरह के इनकी फील्डिंग रही है अब तक। तो अच्छी खबर ये कि अनवर अली वापस आ गए हैं मैदान पर। अभी कुछ देर पहले कंधे पर चोट आई थी इन्हें। क्योंकि इनका फील्डिंग पर होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। सिंध की फील्डिंग में चंद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको देखकर कप्तान मुतमईन रहते हैं। ना सिर्फ क्या जो वो फील्ड पे परफॉर्म करते हैं, बट उनकी प्रेजेंस भी डेफिनेटली सरफराज के लिए बड़ी ज़रूरी है। बहुत साथ क्रिकेट खेली और बड़ी इम्पोर्टेंट इन्होंने हमेशा परफॉर्मेंसेस दी हैं अपने कप्तान के लिए। शानदार पुल शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर, बड़ा छक्का लगाने में कामयाब हुए उवैस ज़ियाब। कल 92 रन की इनिंग्स खेली थी, अपनी टीम को जितवाया था और आज भी वहीं से इस इनिंग्स को शुरू किया है। बहुत खूबसूरत पुश किया बॉल को और इस छक्के के साथ 2000 रन भी अपने कंप्लीट कर लिए उवैस ज़िया ने। पिछले ओवर में कैच ड्रॉप हुआ इमाम का, उवैस का ही कैच ड्रॉप हुआ और अब छक्के से उसको उन्होंने बैक किया है। इसको कहते हैं रबिंग द सॉल्ट इन द वुंड्स। काफ़ी आगे चले गए थे सरफराज अहमद, मुसलसल उकसा रहे हैं अपने फील्डर्स को कि आपके थ्रो फेंकनी चाहिए, क्योंकि मिड विकेट और मिड ऑन पर फील्डर बैकअप करने के लिए मौजूद थे। ये वो ड्रॉप कैच है जो पिछले ओवर में देखा। बॉल हवा में गई, अंडर लाइट्स में मुश्किल है, बट ऑन द मूव थे फील्डर। कोई स्टेबल बेस नज़र नहीं आया, जो कि इस तरह के कैचेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका स्टेबल बेस हो। थोड़ा सा इस टेक्निक में पीछे भागने में भी और बेहतरी आ सकती थी, थोड़ा साइडवेज जा सकते थे। फिर हवा में, लेकिन गैप में भी
छक्का लगाया इब्तिदा में, अब चौका लगाया, बॉलर को दबाव में ले लिया। जानते हैं अनवर अली पूरी तरह फिट नहीं होंगे, उसका फ़ायदा उठाया जाए। वैसे जिधर शॉट ये खेलना चाह रहे थे वहाँ नहीं गई, बट लकीली अपनी गैप में गई ये शॉट और ये 4 रन्स मिले टीम को इम्पोर्टेंट। अनवर अली बाहर गए अपने शोल्डर का ट्रीटमेंट कराने और डायरेक्टली आके बॉलिंग पे आ गए। ये T20 का फॉर्मेट ऐसा है कि आपको टाइम नहीं देता और उसमें फिर आके 1-2 लूज़ बॉल्स की वजह से जो सारा प्रेशर क्रिएट हुआ था 4 ओवर्स में, वो थोड़ा सा अब खुल गया है। थर्ड मैन को आगे बुला लिया गया है, साथ साथ फाइन लेग को भी। स्क्वायर लेग डीप है और एक फील्डर डीप कवर्स में। खुर्रम मंजूर क्याम को चैलेंज किया और बासानी अपनी क्रीज में जा पहुंचे। उवैस ज़ियाब, आपने पिच रिपोर्ट की थी सना मीर, आज पहला मैच तो बहुत लो स्कोरिंग रहा, दूसरा कितना मुख्तलिफ हो सकता है? क्या बैट्समैन रात की तरह आज फिर राज करेंगे? और ये वो डायरेक्ट हिट जिसमें रन आउट तो बिल्कुल कोई चांस नहीं था। जो बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आज सुबह बैटर्स ने बड़ी जल्दी की शॉट्स खेलने में। अभी देखिए इन्होंने थोड़ा टाइम लिया है तो रन्स आने शुरू हो गए हैं। 170-180 मिनिमम इनको करना होगा ताकि एक फाइटिंग स्कोर हो इनके पास डिफेंड करने के लिए। साइड ने आसानी के साथ खेला और 1 रन हासिल कर लिया इमामुल हक ने। कई बार हमने देखा है कि बलोचिस्तान के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करते, इंतज़ार करते हैं, जाकर सेट होते हैं, उसके बाद अपना स्ट्रोक खेलना शुरू करते हैं। इस पिच पे तो यही हिकमत अमली सही रहती है, क्योंकि जब अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं तो मिडल ओवर्स में प्रेशर बढ़ जाता है। जब एक स्टेबल बेस इधर से मिल जाएगी तो फिर आपने देखा आमिर यामीन ने कितनी अच्छी हिटिंग की एंड में, तो विकेट्स इन हैंड होंगी तो ज़्यादा आसानी होगी टीम्स के लिए। इस बार गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी थी, यही सवाल पूछा है विकेट कीपर और बॉलर ने। और साकिब खान ने देर से सही लेकिन अपनी उंगली को हरकत दे दी। और इसी तरह ओवर का खेल भी मुकम्मल हुआ, 5 ओवर में 29 रन। अच्छा, यहाँ उवैस ज़िया जो हैं वो जाने पर आमादा नहीं हुए। दोनों अंपायर्स जो हैं ये सलाह मशवरा कर रहे हैं, टीवी अंपायर से पूछा जाए क्या ये बम बॉल तो नहीं था, और अगर नहीं था तो फिर कैच तो सफाई से पकड़ा है सरफराज अहमद ने। कैच तो कैरी हुआ है, वो सिर्फ आई गेस बम्प बॉल को ही चेक कर रहे होंगे, क्योंकि कैच तो कैरी हुआ है सरफराज के हाथ में। ये अब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है अब की क्रिकेट में, पहले भी था। सॉफ्ट सिग्नल जो है वो आउट का दे दिया अंपायर ने, पर फिर भी थर्ड मैन की तरफ इस डिसीजन को भेज दिया गया। सरफराज अहमद को बिल्कुल यकीन था जब उनने अपील की कि गेंद बल्ले से ही टकराने के बाद आई है। ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ डिलीवरी थी। ये भी देखना होगा कि क्या इनका बल्ला तो ज़मीन पर नहीं लगा था। डिफ्लेक्शन से अपील की थी सरफराज अहमद ने। डिफ्लेक्शन तो नज़र आ रही है, बट बम्प बॉल तो नज़र नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि क्या कहते हैं थर्ड अंपायर। अभी तक जो टेलीविज़न अंपायर हैं वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। गफ्फार काज़मी फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, जो गेंद है उनके कोर्ट में है। तो देखिए नो बॉल तो ये बिल्कुल नहीं थी। 2 बाउंड्रीज के बाद अगर इधर विकेट आ जाती है तो फिर बैलेंस में आ जाएगा। ये देखें ये बॉल की, और लग रहा है डिफ्लेक्शन तो नज़र आ रही है। फॉरेन बैट्समैन ने पीछे भी देखा, जो कि ये साइन होता है कि उन्होंने हिट किया है। अब इस एंगल से पता चलेगा कि कैरी में कोई मसला तो नहीं आ रहा। जी हाँ, ये पीछे बिल्कुल इन्होंने देखा था। आमतौर पर बैट्समैन उसी वक्त ही देखते हैं मुड़कर जब गेंद के बल्ले को लगी हो। पूरा बैट फ्लैश किया और एज
डिफ्लेक्शन तो नज़र आ रही है और लग रहा है कि सरफराज ने क्लीन कैच पकड़ा है। अब देखते हैं थर्ड अंपायर का क्या फैसला होता है। तो अगर टेलीविज़न अंपायर को कोई ऐसी गवाही नहीं मिलती रिप्ले से कि बैट्समैन यहाँ पर नॉट आउट हैं, तो फिर उनको आउट करार देना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड अंपायर आउट दे चुके हैं पहले ही। सॉफ्ट सिग्नल था, सॉफ्ट सिग्नल के साथ जाना पड़ेगा टीवी अंपायर और ये को। आउट का इशारा दे दिया। 29 रन पे 1 आउट, 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। एक ओवर बाकी रहता है पावर प्ले का। अब्दुल वाहिद आए हैं, पिछले मैच में इनका डेब्यू था जो कि ज़्यादा यादगार साबित नहीं हुआ। पहली गेंद पर आउट हो गए थे, शाहीन अफरीदी ने इनको बोल्ड कर दिया था। तो इनके लिए अच्छा है कि नॉन स्ट्राइकर हैं, ज़्यादा आगे निकल आए थे। आज एक मतलब फिर लग रहा है कि घबराए हुए हैं फार एंड पे। और ये वो आखिरी विकेट जिसके ऊपर थर्ड अंपायर पे गया, फैसला काफ़ी क्लीन कैच था। ये देखें, क्लीन कैच नज़र आया और एक अच्छा फैसला अंपायर्स की तरफ से। इमाम अभी तक बॉल को काफ़ी अच्छा मिडल कर रहे हैं। पुल किया इमामुल हक ने, फील्डर हैं स्क्वायर लेग पर, लेकिन गेंद उनसे बहुत दूर चली गई। अच्छा टाइम किया हुआ स्ट्रोक था इमामुल हक का। मीर हमजा की पेस काफ़ी अच्छी है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए आराम से चिप किया और 4 रन्स की जानिब। एक अच्छा शॉट इमाम का। वेट ट्रांसफ़र अभी भी वेट ट्रांसफ़र हो रहा था, बट स्टिल क्योंकि पीछे कोई फील्डर नहीं था तो सेफ रहा, सेफ एरिया में लैंड किया और 4 रन्स मिले। इस टूर्नामेंट में हम अच्छे पुल शॉट्स देख रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अब सना मीर पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तानी बैट्समैन ख़ास तौर पर, ये अच्छे पुल शॉट लगाते नहीं हैं, वो दिखते नहीं हैं जो पहले ज़माने में हम देखते थे पुल शॉट्स। जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खासा था, माजिद खान हूँ या इंज़मामुल हक हूँ, एजाज़ अहमद हूँ। जब इस तरह की पिचेस बनेंगी और मौका मिलेगा प्लेयर्स को, अब देखिए नज़र आ रहा है कि इस वक्त भी बहुत कम बैटर्स हैं जो इस वक्त इस पिच के ऊपर अच्छा खेल रहे हैं। तो जैसे जैसे इस तरह की पिचेस रेगुलरली मिलेंगी और बैटिंग का मौका मिलेगा तो और ज़्यादा बेहतरी आएगी इसमें। इस बार अच्छा अंदाज अपनाया, खासे स्टाइलिश लगे। ये पहला रन है इनका बलूचिस्तान के लिए। बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेट यहाँ पे दोनों बैटर्स खेल रहे हैं। चौका हुआ, इमाम ने सिंगल किया, फिर शर्जील खान के पास बॉल गया, थोड़ी सी मिसफील्ड, पर फील्डर को क्योंकि रीड किया हुआ है तो फ़ौरन दोनों बैटर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ये सिंगल किया। पावर प्ले में इस पिच पे जब थोड़ी मुश्किल आ रही है तो ये सिंगल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो स्कोर बोर्ड को चलाए जा रहे हैं। जो भी टीम इन सिंगल्स को ले रही है उसका टारगेट भी और बेहतर होता जा रहा है। इमामुल हक क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार फास्ट बॉलर पर देखा गया कि लेट हो जाते हैं, लेकिन इन दिनों अच्छी फॉर्म में हैं और ये मैन ऑफ द मैच भी हो चुके हैं। मुल्तान के मरहले में सेंचुरी बनाने के करीब आए थे, लेकिन नर्वस 90s का शिकार हुए। इस मैच में एक इन्फेक्शन जो पिछले मैच में हो गई थी, रेस्ट दिया गया, उसके बाद वापस आ रहे हैं, पर सिवाय एक शॉट के बड़ी अच्छी मिडल हो रही है। फॉर्म का अंदाज़ा हो रहा है कि अच्छी फॉर्म में है इस वक्त इमाम, और बड़ा इम्पॉर्टेंट है इनके रन्स करना बलूचिस्तान के लिए। वाइड गेंद, एहसन रजा
जिनकी हाल ही में फिर से नामजदगी हुई है आईसीसी इंटरनेशनल पैनल में। दरअसल पीसीबी ने इन्हें बरकरार रखा है उस पैनल में, जिसमें इस बार शोज़ेब रज़ा हैं, उनके अलावा राशिद रियाज हैं। अच्छी बात है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी हर फील्ड में हो रही है। अंपायरिंग में अलीम डार ने एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया पाकिस्तान के लिए। और ये फिर आसान सा कैच गिरा दिया आपने फॉलो थ्रू में। देखिए अब ये दूसरों को दोष नहीं दे सकते, अपनी गेंद पर आपने ये गलती कर दी। नई जिंदगी मिली अब्दुल वाहिद को 37 पर 1। इधर आओ, फौरन मिड विकेट आओ, इधर आओ, तुम किसी जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, जल्दी कवर जाओ। स्पिनर को लाने का फैसला किया है कप्तान सरफराज अहमद ने। हसन खान बॉलिंग करेंगे अब मीडिया सेंटर एंड से। बड़ी जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस थी हसन की कल के मैच में। इमामुल हक जो हैं स्पिनर्स पर उनके मुताबिक ख्याल किया जाता है कि उनको अपनी बैटिंग बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ये वो कैच है जो बॉलर ने खुद ड्रॉप किया। बहुत सिंपल कैच था लेकिन अपने फॉलो थ्रू में थे फास्ट बॉलर, अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गया। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लगे। पकड़, ठीक है, वेरी वेल बॉल, शाबाश शाबाश शाबाश। ये अच्छा मौका, नए बैट्समैन आए हैं और वो इतने पुरएतमाद नहीं लगते। यहाँ पर आप डॉट गेंदें कर सकते हैं, दबाव बढ़ा सकते हैं। स्पिन देखने में आई पहली बार। थोड़ा सा पिवट इनका बहुत अच्छा है बाकी बॉलर्स की निस्बत अगर आप देखें। और ये वो कैच है, दोबारा से आप देखें, पूरा हाफ हार्टेड शॉट खेला और फॉलो थ्रू में होने की वजह से इस तरह का कैच होना चाहिए इस लेवल पर अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गया। हाँ, ज़रा सा पल्ला भी अपना जल्दी क्लोज कर लिया था बल्ले का फेस एंगल के खिलाफ, इसलिए भी गेंद वापस चली गई हवा में। बलोचिस्तान की टीम की कारकर्दगी अच्छी रही है इस टूर्नामेंट में अब तक, क्योंकि पहले मैच में इन्होंने सिंध को 2 रन से हराया था, फिर सदर्न पंजाब को 16 रन से शिकस्त दी, सेंट्रल पंजाब को 3 रन से हराया, नॉर्दर्न के खिलाफ इनको शिकस्त हो गई थी, खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ 1 मैच जीता, 1 हारा है। सरफराज को काफ़ी गुस्सा आ रहा है। सर्कल के अंदर की फील्डर सिंगल्स दे रहे हैं और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे उनको बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। इस लेवल पर फील्डर्स को पता होना चाहिए जब लेफ्टी और राइटी में कि कहाँ उनको खड़ा होना है। 7 ओवर के खेल के बाद 41 पे 1 खिलाड़ी आउट। चलो बॉय, शाबाश। पिछले मैच के हीरो 92 रन बनाए थे उवैस ज़िया ने, लेकिन इस मरतबा वो जल्दी आउट हो गए। और अब्दुल वाहिद को इस बैटिंग ऑर्डर में अकोमोडेट करने के लिए इन फॉर्म बिस्मिल्लाह खान अब नंबर 4 पर खेल रहे हैं। हालांकि वो ओपनिंग करते हैं, ये 1 डाउन आते हैं। काफ़ी हमने शफल देखा है काफ़ी टीम्स के बैटिंग ऑर्डर में। मेजॉरिटी प्लेयर्स को चांस देने की कोशिश हो रही है, हर नंबर पे उनको आजमाया जा रहा है, क्योंकि इस साल क्रिकेट वैसे कम हुई है, पर जो पीसीबी की एफर्ट्स हैं इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्रिकेट कर सकें अब और मैक्सिमम यंगस्टर्स को और प्लेयर्स को चांस मिल सके।
और अच्छा इस्तेमाल किया कदमों का और दूसरे रन के लिए वापस लौट आएंगे। अभी ये गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेल रहे थे बलूचिस्तान की सेकंड 11 के लिए अब्दुल वाहिद, और वहाँ पर अच्छी कारकर्दगी का इन्हें सिला मिला, रावलपिंडी बुला लिया गया। यही एक प्लेयर को इंकरेजमेंट चाहिए होती है कि जिस वक्त उसकी फॉर्म अच्छी हो उस वक्त अपॉर्चुनिटी दी जाए उसको। जब मुझे याद है एजाज अहमद जूनियर जो इन दिनों कोचिंग करते हैं, जब उन्होंने एक सीज़न में 1700 रन बनाए थे, फर्स्ट क्लास रन्स, तो उन्हें पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया था शारजा के टूर्नामेंट के लिए। वहाँ पहुँचते ही उनका अंगूठा ज़ख्मी हो गया, वो नहीं खेल सके। अगले सीज़न में वो वैसी फॉर्म में नहीं थे, टेस्ट क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, लेकिन रन्स नहीं बना सके, वो टीम से बाहर हो गए। बस यही होता है क्रिकेट में, पार्ट ऑफ द गेम है इंजरी। इस चौके के साथ टीम की 50 मुकम्मल हुई। बहुत इंटेलिजेंट बैटिंग, कोई रिस्क नहीं ले रहे। फील्डर्स जो सर्कल पे हैं उनको देख रहे हैं, बैकफुट पे जाके फुल उन्होंने मिड विकेट के एरिया को देखा हुआ था। फील्डर शर्जील खान वहाँ मौजूद थे। काफ़ी मुश्किल शॉट था जो इमामुल हक ने अटेम्प्ट किया और बाउंड्री हासिल की। असद शफीक से बॉलिंग करा रहे हैं सरफराज। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसीजन है क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैटर ऑन स्ट्राइक है, तो वो ऑफ स्पिनर के साथ जा रहे हैं। अच्छे लगे हैं अब तक स्पिनर के खिलाफ। अब्दुल वाहिद अपने फीट यूज़ कर रहे हैं, गेंद की पिच तक आ रहे हैं, बिल्कुल मेरिट पर खेल रहे हैं स्पिन के साथ साथ। अगले ओवर में वही स्ट्राइक लेंगे 52 पर 1। थोड़ा आगे आओ, ठीक है खुरम इधर आओ, थोड़ा टाइट रखना, सिंगल पे बस, ठीक है असद, उससे जाएगा ना। मीनू बाहर हो बेटा, शाबाश शान शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो। Just that one wicket on the highest runs in an over. That's well done by Sarfraz. He's relying more on spinners. I was thinking when we were coming back, he might not go for the Asad Shafiq option, but he's still given him in that one over. He probably want to get rid of as many overs from the spinners right now. If you have a look at the team, he's got Hasnain, Mir Hamza, Sohail Khan, so that's your 12 overs. Then you got option of Hassan. And Anwar Ali, of course, has his 4. This is an extra option. Or Danish Aziz. He goes for Asad Shafiq, which is fair enough. He's got his own plans. But also, you got to look back and say that if they, Sindh, start grabbing every opportunity coming their way, they'll probably find themselves in a better, comfortable position. Cotton ball dropped by Mir Hamza, another catch dropped by Danish Aziz, and they're not tough catches. Yeah, could have easily been 3 or 4 down by now. At least they have contained the batsman. It's only 54 runs in 9th over. So in terms of run rate, they have controlled it very nicely. But if they take their chances, which they have missed a lot in this tournament, they could have been in much better position. Is there something you are not reading, we are not reading from up here? Because 28 balls for 27 runs for Imami opened. We had seen batsmen struggling in the power play. So a good batting wicket, we've been endorsing it since morning. We'll come back to this last ball of the over. Should be a single, as a Sarfaraz says. 9 gone, 55 for 1.
Back once again, 55 for 1 after 9. We were just talking about how the batsmen are not really finding it easy. More than run a ball for Imam. He's been there for 9 overs now. And it's not just him. We've seen openers struggling. Shan Masood earlier on with his partner who wouldn't last for long. Good carry. I spoke to a couple of players earlier on when the first match finished. They seem to say that they have a difficulty. There's drop catches. That's at this standard. This is a regulation, especially in this format. And this one, he misjudged it, the pace of it. And it was easy as it comes as a cotton ball. We saw it in the afternoon, right here, long on. The fielder rushes in and overshoots the target. And then again over here, Danish, as he's going backwards, trying to go for the catch, suddenly realizes he's moved way too back. The ball drops in front of him. So like you said, at this level, or at any level, they should be taken. Yes, how you go back is important. You know, the coaches tell you you have to go back going sideways, so you're in much balanced position. And once you go like back flipping, then it's becomes your head moves too much, and sometimes you run back more than you actually need. Usually we see in the high catches moving backwards, the fielders go for reverse cupping. But this time around he overshot again, so he had to have his arms stretched out trying to get to it. And I don't know if he got a finger to it, because he really moved back. We're talking about Danish Aziz's catch. What that does to your bowler is that when you talk about a good batting wicket, the bowler has to work that extra bit to create those opportunities, and then you just sense that you're losing that intensity because you need the fielder support. Nicely pulled away. That's a boundary. Khurram Manzoor couldn't cut it off. That was not a long distance to cover in the deep. It was short, and he played it very hard towards mid-wicket, and that was not far away from Khurram Manzoor. He should have moved more quickly towards his left, but captain and the bowler was not happy with Khurram Manzoor's effort. Yeah, should have been much better effort made. Sprint could have been quicker. As a large area is covering from square leg all the way to long on. So you've got to be right and ready. The ball can come either way. Took a brilliant catch, Asad Shafiq, last night. He was to dismiss Babar Azam. He took that catch because he never gave up. That's the key. Sometimes fielder thinks that I can't get there, but actually if you keep going towards it and give a full effort, actually sometimes you can reach there. Just like that, he nearly pulls off a wonderful run out. He is in pain. Anwar Ali is in pain. He went after the ball in his follow through, and he wanted to hit the stumps at the striker's end, and just when he did that, he was in tremendous pain. He's surely pulled something. Earlier on, we saw he was trying to stop a ball at mid-on. He was hurt, he was taken out, probably a bit of icing, came back. He not recovered of it. Have a look at this again, Azhar. He's fine here. He goes after it. Follow through, well done. Running in the opposite direction. There. Dives again. That's the point. He throws the ball and he's in serious pain here now. He's done it again when he was throwing it on the move. It's great effort from him.
knowing that he hurt that earlier on the same shoulder. That's his left shoulder. We'll come back to this. 10 overs bowled, 62 for 1. चलो चलो जल्दी 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 चलो बच्चों शाबाश 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 शान चलो 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 बॉयज नहीं पीछे निकल जा यहाँ आजा असद यहाँ आजा असद ये लोग हैं पीछे मिड ऑन चला जा मिड ऑन कोई नहीं है भाई फिल्डर कौन आया Well, good to see that he's walking back. He's having a chat with the physio Imtiaz, but I doubt that he would probably be able to complete his overs. We'll hope and see that he comes back in action. Hassan Khan. Down the wicket comes Wahid, and he's going to earn the maximum. Not a happy wicket-keeper captain there. 2 full. Call from Sarfraz was tight rakho ball ko leke, but that was a fantastic shot by Abdul Wahid. It's a big one. Abdul Wahid thinks now he needs to move on. A bit of advice from Sarfraz. Let's have a look at the drop catch. Oh, this is the fielding thing, I'm sorry, where Anwar Ali hurt himself. He's running to his left, he dived, and somewhere his shoulder gets locked. This is the moment. His left shoulder, he's in serious pain. Now, just in the previous over, in his follow-through runs, lands, and that's the moment where he pulls this left shoulder again. And this time he's in more pain. He throws himself around in the field. He's one of their best fielders. Him and Asad Shafiq has to do a lot for his team because they're the most trustworthy fielders they have, and they throw everything in the ground. I like the commitment level from Anwar Ali, though he was not his 100%, but still trying to give everything to the team. And we were waiting. What's the hold up for? Asad Shafiq was not on the. Okay, now Asad Shafiq is back. Hassan! Hassan! He's also a good fielder. There's a moment here. Oh, he needed that throw, but then again, it's good that the attempts are there. The want and will is there to do something. Another good piece of fielding by Hassan Khan. Just saved 1 run only, but that can lift the team. He bowls these good deliveries. You got to keep talking to him. Hassan is not a bad bowler. He knows exactly what's required out of him. You just get that feeling at certain moments within the over that he bowls just one to get it done with. That's when he bowls full right under the bat and he gets hit. Inside out, upish, safe. Will it be cut off? 3 are after it. No, that's a boundary. Big over this up till now for Balochistan. 11 already, the maximum, and this 4 along with a single. Very well calculated risk taken by Imamul Haq. Made room for himself and created that gap. Well done this time. Hassan followed the batsman. Can they stop them from 2? Wow. We're talking about how. Well, we understand. He wanted Khurram to give a better effort from the deep. Feels that 2 was not available. 13 of 5 deliveries.
Once again, they're going to test him. They're coming back for two. Can Khurram stop them from taking the second? They complete it. Slightly better effort there. And it's 77 for 1 after 11. Just that one wicket, that red dot right there, in over number 5. This was the biggest over, the last one from Hassan Khan. 15 runs of the over. Yeah, wickets in hand. They need to move on now. 9 wickets in hand, 77 runs on the board. They can afford to take few risks. Hasnain's been good. He was bowling in the power play, right on the money. Bowling this good length, he's really cramping them for space. He's got pace as well. I've seen Haris Rauf getting some bounce from this pitch, and Hasnain has got similar pace. Bowls a heavy ball as well. That's a good one. That's slightly shaping away. Still getting a bit of movement there. It was a wild swing of the bat. Nicely done. The comparison with the, I've seen there was a bit of swing for Hasnain, nicely bowled. We've seen Babar Azam batting yesterday. He was batting with beautiful timing on the same pitch. Other batsmen were struggling. Just over the keeper, will go to the boundary. Top edges, you can't do anything about that. And especially when you got the pace of Hasnain. With that boundary, it's 50 partnership between these two, and that was a lucky one, but they will take it. They need to move on. They got wickets in hand. Doesn't matter how they come in T20 cricket. '81 for 1. You feel Balochistan has recovered from that slowish start. The good thing about them, as you mentioned, they've got 9 wickets in hand. That's the key. So they can flaunt a bit with different calculated risks. Oh, that's nicely picked, and it's hit the rope on the full, so it should be a maximum. I'm sure they're going upstairs, but wow, what a nice wrap shot. That was a brave shot from Abdul Wahid. Hasnain is bowling around 140, 145 and going on to his knees and play that ramp shot perfectly. And it may just fall inside just before the skirtings. That has made Sarfaraz push fine leg back to the rope. As you see in the replay, he's still there inside the circle. So now he's back on the rope and he's still waiting for the official call. This just, in real time, it feels that it's hit the rope on the full. And the replay, it probably is hitting the base on that advertising cushion. It's very close. I just have a feeling it just bounced just inside, maybe. This angle might give us a better look. Well, still the same. Let's hear it from you. I say it's a hit on the full. I think it is, because this is
There's no way that this curtain would just completely come off. I can still see it. It's right in front of us from where we are sitting. I won't like to be a third umpire for this one. It might end up the difference between the two sides. Yeah, you don't want that. Yeah, difference of 2 runs. We'll surely show this replay then. But the good thing is, if they give it a maximum, we get more trees here, 10 more trees. But that's going to happen if it's a 6. I think if we're waiting that long, I think the doubt would then make the umpire go safe, go for a boundary, and that's what it is. 4 added to the total. We should now read 85. 85 for 1. So back-to-back boundaries here for Balochistan. Nice shot for 1. He's grown in confidence after that 6 over the side screen of Hassan Khan. You see more authority in his shots. They're getting good runs every over. They're definitely pushing the accelerator here. Got 15 a couple of overs ago. And they settled one with 11. They're already 9 of this over, though they are 2 dot balls. Still got 1 ball to go. This then coming round the wicket to Imam. Cut away, that should be a boundary. There's no way the fielder's going to cut that off. So this is another big over for Balochistan. 3 boundaries in it, 13 of it. It's now 90 for 1 after 12. अब्दुल वाहिद ने अब तक इस मुख्तसर इनिंग्स में बहुत मुतासिर किया है अपने फुटवर्क के जरिए। स्ट्राइक रेट भी उन्होंने बेहतर रखा हुआ है अपने सीनियर पार्टनर से, इमामुल हक से। और हम इस पर बात करेंगे पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर वसीम अकरम से। दूर दराज इलाके से आए हैं, बलूचिस्तान से। ये दूसरे क्रिकेटर हैं जिनको दुनिया देख रही है। बिल्कुल, बड़ा इम्प्रेस किया इसने मुझे भी और हम सबको इस कमेंट्री बॉक्स में। अब्दुल वहीद ने थोड़ा सा आगे रहना बाउंड्री से, थोड़ा सा आगे रहना। और ये सिर्फ 17 साल के हैं। सरप्राइजिंग, दैट शोज कि टैलेंट ज़रूर है बलूचिस्तान साइड पे। और ये प्रॉब्लम इनको देख के और यंगस्टर्स भी आएंगे, उनको भी मौका मिलेगा। इस फॉर्मेट का ये फ़ायदा है, इस सिस्टम का ये फ़ायदा है कि क्वालिटी प्लेयर्स आपको मिलेंगे। बड़ा इस पे ले दे हुआ कि डिपार्टमेंटल ख़त्म हो गई, ये आ गई टीमें। अब इन टीमों में आपको जो फील्डर बुरा होगा टीवी के मैचों में, बाकी फर्स्ट क्लास के भी आ रहे हैं, वो पता लग जाएगा। आप छुप नहीं सकोगे। परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है तो छुपेगी नहीं, सबके सामने आ जाएगी। सरफराज अहमद इन दिनों बहुत परेशान है ख़राब फील्डिंग की वजह से। वो क्यों परेशान है? कल उनको बेस्ट फील्डिंग टीम का अवार्ड मिला यार तारिक। वो खुद शौक में था, हमें अवार्ड मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद दूसरी टीम जो थी वो इनसे भी कमज़ोर थी इस मामले में। आई सपोज अभी नया सिस्टम बनाया अतीक ने, जो पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस के फील्डिंग कोच हैं। आई सपोज लॉन्ग विकेट मिल गई मेरे ख्याल में। ओवर हुआ है, विकेट मिली है, कुछ समझ यहाँ ये अपील की है स्टंप की यहाँ पर सरफराज अहमद ने। उनका ख्याल था कि बैट्समैन क्रीज के बाहर हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया क्रीज छोड़ के अब्दुल वाहिद ने, क्योंकि अंपायर ने उन्हें इशारा दे दिया था, एहसन रज़ा ने।
काफ़ी डिसअपॉइंटेड है अपने आप से, अच्छा सेट होकर चुके थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे 32-36 गेंदों पर। अब टेलीविजन अंपायर से ये पूछा गया है, रोका गया, पहले ऐसा तासुर मिला था कि शायद अंपायर ने इन्हें आउट करार दिया, यहाँ तक तो बाहर लग रहे हैं, इन्होंने वापस जाने की कोशिश ही नहीं की। हाँ बिल्कुल, शायद आई सपोज उनका जो पाँव था शायद वो फंस गया था लाइन के बाहर, उससे लग रहा है, बिकॉज अनलकी रहे थोड़ा, वो अपने आप को शायद क्रीज में समझ रहे थे, और सरफराज ने पूरा टाइम लिया, उसने अपना अच्छा बॉल पकड़ा, कैरी अच्छा पकड़ा, ही रियलाइज के देन ही रियलाइज के वो क्रीज के बाहर हैं, तो देखिए फिर उन्होंने बेल्स को उड़ाया। सरफराज अहमद ने यहाँ पर इत्मीनान से गेंद को कलेक्ट किया, और वो देख रहे थे कि ये बाहर हैं, इसलिए अपना वक्त लिया और फिर इन्हें वापस आने का मौका फराहम नहीं किया। अंदाज़ा हो गया था खुद भी अब्दुल वाहिद को, उन्हें चलना शुरू कर दिया था। टीवी अंपायर अब तस्दीक कर देंगे उनकी बरतरफी की। बिल्कुल, और बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में मौके पे विकेट मिली सिंध को, पार्टनरशिप ज़बरदस्त जा रही थी, बड़ी अच्छी बैटिंग की इस यंगस्टर ने, ब्राइट फ्यूचर है इनके आगे, तारीफ करेंगे इनकी। 32-36 गेंदों पर अब्दुल वहीद का, और बलोचिस्तान 94 पर 1। सिंध ने टॉस जीता, सरफराज अहमद ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अब तक उनके बॉलर्स ने उनके फैसले की लाज रखी है, ज़्यादा आज़ादाना रन्स नहीं बनाने दिए, हालांकि इमामुल हक शुरू से खेल रहे हैं। हारिस सुहेल आए हैं नंबर 4 पोजीशन पर, बिस्मिल्लाह को अभी भी इंतज़ार करना होगा। इमाम ने एक एंड से ठीक है, एंड भी रोका हुआ है, स्कोर भी कर रहा है, क्योंकि स्ट्राइक रेट सिर्फ 119 का है। अब वो सेट हो चुके हैं, 13वें ओवर में है, 8 विकेटें हाथ में हैं, थोड़ा सा चांस लेना पड़ेगा सेट बैट्समैन को, कम से कम स्ट्राइक रेट 130 तक, 135 तक इनका आना पड़ेगा 14वें-15वें ओवर तक। और इस ग्राउंड में हमने देखा कि सेकंड जब बैटिंग आती है किसी भी टीम की, अगर विकेटें उनकी गिर भी जाती हैं नए गेंद से, 13 ओवर मुकम्मल, 96 पर 2। वही मैं बात कर रहा था ब्रेक से पहले, उसकी स्ट्राइक रेट की एज एन ओपनर 13वां ओवर तक 37 गेंदों पर 118 रन का स्ट्राइक रेट इमामुल हक का। अब यहाँ से ये ओवर्स इनको तेज़ होना पड़ेगा, अगर इन्होंने 180-190 तक जाना है तो नाउ इज़ द टाइम एटलीस्ट फॉर द सेट बैट्समैन। हारिस रऊफ तो अभी आए हैं, वो तो 1-2 ओवर, एक आधा हारिस सुहेल बैगी पार्ड 1-2 गेंदें लेंगे, 3-4 गेंदें लेंगे, ये सेट हैं, इनको अब चांस लेना पड़ेगा। अब तक एक रिसर्च हुई है वसीम के, T20 क्रिकेट में औसतन हर मैच में 6 विकेटें गिरती हैं, तो कई बार आपके जो अच्छे बैट्समैन होते हैं T20 के, वो इंतज़ार करते रहते हैं, उनको बहुत कम गेंदें मिलती हैं, आपके अच्छे स्ट्राइकर को कम गेंदें मिलती हैं, शायद विकेट जो है ठीक कार। ये अब देखें ना, अब 50 की अहमियत नहीं है जब अगर राना बॉल आपका 50 है, अहमियत 30-35 रन की है अगर आपका स्ट्राइक रेट 135 या 40 का है, तो इसलिए औसत की भी उतनी अहमियत नहीं है जितनी स्ट्राइक रेट की है। बिल्कुल बिल्कुल।
काफ़ी लंबे रनअप से बॉलिंग कर रहे हैं मीर हमजा। अच्छा स्पेल किया इन्होंने पावर प्ले में। और आजकल कोचेस जो नया माइंडसेट लेके आए हैं वो एवरेज को और स्ट्राइक रेट को कंबाइन करके देखते हैं। जी हाँ, और एवरेज और स्ट्राइक रेट को कंबाइन करके अगर आपका 160 आता है, यानी आपकी अगर आपका स्ट्राइक रेट 135 का है, आपकी औसत 25 की है, तो आपको अच्छा बैट्समैन समझा जाता है। जी बिल्कुल, बिकॉज इसमें एवरेज 40 या 45 के एवरेज से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपका स्ट्राइक रेट रन बॉल है तो फिर 115, 119, 118 तक आ जाती है आपकी। उनका इमाम का जो करियर का स्ट्राइक रेट है वो 122 है T20 क्रिकेट में। इनको इवेंचुअली तो नहीं, सूनर द बेटर। शॉर्ट डिलीवरी 1 फॉर द ओवर, उनको 130-35 तक लेके जाना पड़ेगा। विराट कोहली को देख लें, 140 का स्ट्राइक रेट है। ज़्यादा बाउंड्रीज भी नहीं लगाते। नहीं, वो नंबर 3 या 4 पे आते हैं। डेविड वार्नर एक बड़ी मिसाल है, टॉप ऑर्डर में 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। डेविड वार्नर की मैं तारीफ इसलिए करूंगा, वो एज अ T20 स्पेशलिस्ट आए थे, उसके बाद टेस्ट के ग्रेट प्लेयर बन गए। वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने अडेप्ट किया शॉर्ट टर्म से शॉर्ट फॉर्मेट से लंबे फॉर्मेट तक। वार्नर का भी 140 का स्ट्राइक रेट है। सो यही इन यंगस्टर्स को सीखना है कि हमने इनको फॉलो करना है। और वो शॉटें भी वो अंधाधुंध नहीं मारते। वो कहते हैं ना, हम आंखें बंद करके नहीं मारते, वो बना के, वेट करके, बॉलर ढूंढ के, सिचुएशन देख के, इस गेंद पे अगर 2 बौंदे डॉट हो गई हैं तो मैंने इधर सेफ चांस लेना है। ये नहीं कि बस आंखें बंद करके मार दी, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो आउट है। सरफराज अहमद बलोचिस्तान यहाँ पर सिंध की टीम की कप्तानी कर रहे हैं। अच्छे कप्तान हैं T20 के। वसीम, आपको सबसे ज़्यादा किस कप्तान ने मुतासिर किया इन 3 दिनों में? मुश्किल को सवाल पूछ लिया आपने। आई सपोज जो टीम मुझे बलोचिस्तान ने थोड़ा इम्प्रेस किया, इनकी टीम में बड़े नाम नहीं है इतने, और उस तरीके से हारिस ने जिस तरीके से कप्तानी की है, देखें ना, ये 2 पे हैं टेबल पे, नंबर 2 पे 8 पॉइंट के साथ, कोई ख़ास बड़े नाम भी नहीं हैं 1-2 के अलावा। सो दैट शोज़ के इसकी कप्तानी अच्छी है। जहाँ इनसे पहले शादाब खान मुल्तान के लेग में, उन्होंने अच्छी कप्तानी की थी और लगातार 4 फतुहात दिलवाई थी नॉर्दर्न की टीम को। तो कप्तानों के दरमियान भी एक अच्छा मुकाबला हम देख रहे हैं। बिल्कुल अच्छी टीम हो ना आपके पास, जैसे कि नॉर्दर्न्स की है, ऑब्वियसली क्रेडिट जाएगा उनके कोच को, जिस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन की, रिटेंशन की, डील्स की बाकी टीमों से। और बात करेंगे इसके ओवर के बाद। 14 ओवर मुकम्मल, 98 पर 2। बैग उठवाना आगे से, एक टपाल इधर को रखो थोड़ा सा। ये देखिए, उतार चढ़ाव का शिकार रही है ये इनिंग्स। हम देखते हैं कहीं कहीं 10 से ज़्यादा रन्स बने। सिर्फ 3 ही ऐसे ओवर्स हैं जहां पर डबल फिगर में रन्स बने, बाकी हद तक सिंध का कंट्रोल रहा। 14 ओवर हो गए हैं, सिर्फ 98 रन है, 2 विकेटें गिरी हुई हैं, 8 विकेटें हाथ में हैं। अगर हमने दुनिया की क्रिकेट में मुकाबला करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो यहीं से बेस बनेगी ना हमारी। अब यहाँ पे ओवर रेट की बात करो, अब सुहेल खान आ गया है, सेट हो गया है, फील्ड चेंज कर रहा है, वार्म अप कर रहा है आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम ना खेलो जी। बैट्समैन को भी ज़्यादा जल्दी नहीं है। हारिस सुहेल की कोशिश है कि इमामुल हक अब ज़्यादा सामना करें, जो 1 स्ट्रोक के फासले पर हैं अपनी निस्फ सेंचुरी से। इमामुल हक के इस टूर्नामेंट में 250 से ज़्यादा के स्कोर हैं। ये कोच ये हम देख सकते हैं, डगआउट है बलोचिस्तान क्रिकेट टीम की।
इनके हेड कोच फैसल इकबाल हैं, नए नए कोच लगे हैं अब्दुल रज़ाक की तरह, वो भी आज हम देख रहे थे मोहम्मद वसीम भी वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, डगआउट में नहीं आए। हर कोच की अपनी कोई स्ट्रेटजी होती है। आइडिया है कि लड़के बाहर बैठे, लड़कों का बाहर बैठना बड़ा ज़रूरी है। जो मुझे नहीं पसंद चीज़ के 6 लड़के अंदर बैठे हैं, 3 लड़के उधर बैठे हैं, 2 लड़के उधर बैठे हैं। इट्स अ टीम स्पोर्ट। वसीम हैदर जो असिस्टेंट कोच हैं, उनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेली मैंने PI से, और बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे। और फिर बलोचिस्तान के कोच, उनको भी उनकी बस जिक्र करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम अच्छा कर रही है तो उसमें कोच का अमल दखल भी होता है। और सेम गोस सिंध को ज़रा ऑब्वियसली बात से थोड़े परेशान लग रहे हैं। परेशान से मुराद ऑब्वियसली फील्डिंग, एक उनको पता है कि वीकनेस है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, तो फील्डिंग ठीक नहीं हो सकती। अब अगले तब दोबारा आएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उन्हें पता होगा मैंने कौन सा प्लेयर रिटेन करना है, कौन सा रखना है, कौन सा इंप्रूव हो गया है, कौन सा नहीं इंप्रूव हो गया एज अ फील्डर। 100 रन मुकम्मल हुए बलूचिस्तान की टीम के। 15वां ओवर जारी है, अभी भी इनके पास मौका है कि ये ज़रा सा पाँव दबाएं, इस स्कोर को 160 165 की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि टीम ये जो इनिंग्स है इनकी ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल मुंजमद सी हो गई है विकटें होने के बावजूद। हाँ बिल्कुल, इनिंग बिल्कुल स्लो हो गया, रन रेट कोई अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही, ना इमाम में ना हारिस सोहेल में। अब स्लो ओवर रेट की बात करते हैं, 3 मिनट हो गए, 3 बॉलें की हैं अभी सोहेल खान ने, और बाउंड्री भी नहीं लगी। यहाँ तो बाउंड्री लग रही हो ना, छिक्के पे छक्का और गेंदबाज जा रहा है, कैन अंडरस्टैंड। सिंगल्स हो रही हैं, देखें कितने इजीली वापस जा रहे हैं, अंपायर भी उनको नहीं कह रहे जल्दी कर रहे हैं। आराम से गप लगा रहे कीपर से सोहेल, नो रश बड़ी। कुछ प्लेयर सेकंड लेग में सेकंड 11 से बुलवाए हैं, सो इसका फ़ायदा है कि अगर आपके इनफॉर्म प्लेयर अगर वहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, आप उनको बुला सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं अपने फर्स्ट 11 के प्लेयर से। जैसे अब्दुल वाहिद सेकंड 11 से आए हैं और इमरान फरद की जगह। जी, इमरान फरद ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, वो कहा था कि ये उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। उमर गुल ने भी कहा था कि ये उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट है डोमेस्टिक का। फॉर दी सीनियर प्लेयर्स टू प्ले, ठीक है, अपनी अपनी, पर मेरा माइंड सेट डिफरेंट होता है। इसका मतलब है अगर आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो यंगस्टर की जगह ले रहे हैं ना। एक और अच्छा स्लो बॉल, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा इस वक्त बलोचिस्तान की टीम से, लग रहा है वो कोशिश भी नहीं कर रहे। इमामुल हक 47-40 गेंदों पर रन स्ट्राइक रेट और पीछे आ गया है। अब यहाँ से 10 ओवर भी जाएंगे तो 154 होगा, और अगर ये जाते हैं 11 ओवर 159 होगा। 11 ओवर में जाएंगे तो ज़्यादा 12 चले जाएंगे, 13 ओवर चले जाएंगे, तो दैट वुड बी इनफ होगा नहीं इस पिच पे सेकंड बॉलिंग में। और इस बार हवा में खेला, लेकिन बिल्कुल महफूज शॉट है, 4 रन मिल गए। निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की इमामुल हक ने, उनकी इस चैंपियनशिप में ये तीसरी निस्फ सेंचुरी है। अपनी फॉर्म को कैश करा रहे हैं मुल्तान के बाद रावलपिंडी में भी। जी बिल्कुल, 15 ओवर मुकम्मल, 107 पर 2। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त बलूचिस्तान और सिंध का मुकाबला जारी है नेशनल T20 चैंपियनशिप में। उसका दूसरा राउंड खेला जा रहा है। इससे पहले इन दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचेस हुए, वो दोनों बलूचिस्तान ने जीते थे। हारिस सोहेल ने बहुत बड़ा छक्का लगा दिया, ये तो शोएब अख्तर इंक्लोजर की तरफ गेंद चली गई। मतलब 15 मिनट वेट करना पड़ेगा बिकॉज
क्राउड ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, द कोविड-19, और कैमरामैन है वहाँ पे शायद, नहीं कैमरामैन नहीं, आई थिंक रोबोट कैमरा है, और अभी तक बॉल का वेट कर रहे हैं। स्लो ओवर रेट की हम बात कर रहे थे, क्या शॉट मारी हारिस सोहेल ने, ये देखिए, तैयार थे, ओ बिग शॉट, बिग हिट। गेंद अभी तक आई नहीं। एक मैच मुझे याद पड़ता है, वसीम अकरम उस ज़माने में अनफिट हो गए थे 1996 में, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का यहाँ टेस्ट मैच था, मोहम्मद जाहिद ने अपना डेब्यू किया था, 11 आउट किए थे, और आई थिंक उस सीरीज में अगर मुझे याद हो तो पाकिस्तानी बॉल यूज़ किए थे हमने। जी हाँ, और वो अनोखा एक वाक़या हो गया था गेंद का, कि वो गेंद नहीं पहुँच सकी थी, पाकिस्तानी हेड कोच आ रहे थे लाहौर से रावलपिंडी, वो गेंदें बस में रह गई, और यहाँ मकामी जो एक जावेद स्पोर्ट्स एक दुकान है बनी चौक में, वहाँ से मंगवाई गई थी गेंदें। तो पाकिस्तानी कोच कौन था तब, ये तो बताया ज़रा। उसकी एक जॉब थी कि गेंद तू नाल लेके आने ने, और वही भूल गया। वेरी नाइस। पिछले मैच में सदर्न पंजाब की टीम को फाइन हुआ है स्लो ओवर रेट का। इतना पैसा कैसे देंगे यार, 10,000 रुपया पूरा। ये अच्छी डिलीवरी थी, अच्छा यॉर्कर फेंका, बैट्समैन को बिल्कुल मजबूर किया, वो मुश्किल इसको डिग आउट कर सके। थोड़ा दूर से खेला, लेकिन आखिर में गेंद फील्डर से दूर ही गिरी। तो वसीम, अभी आप जुर्माने की बात कर रहे थे, तो जो इस वक्त इंग्लिश क्रिकेट में जो स्लो ओवर रेट पर पेनल्टीज का सिलसिला चल निकला, रन्स आपके काट लिए जाते हैं, 6 रन्स काट दिए जाते हैं। सीपीएल में आपका जो रन रेट होता है उसको कम कर देते हैं। ये ज़रा पेनल्टी है, टूर्नामेंट में फ़र्क पड़ सकता है आपके क्वालिफाई होने का, आपके मैच हारने का। अगर आपने 10,000 फाइन करना है तो मेरा ख्याल है अगर मैं प्लेयर हूँ मैं तो बॉदर नहीं करूँगा, तो मैं कर दो यार स्लो ओवर रेट। अब पिछला ओवर सुहेल खान ने 5 मिनट में ख़त्म किया था, 5 मिनट में। वाइड यॉर्कर अटेम्प्ट किया, बाल बचे इस बार वाइड से भी। ये देखिए, अब 50 रन इमामुल हक के विकेट की दोनों तरफ खेलते रहे, और स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ है। इमामुल हक की कट और पुल शॉट इन्होंने बेहतरीन अंदाज में खेले, लेकिन अब यहाँ से गेयर को तब्दील करने की ज़रूरत है। वक्त और गेंदें इनके हाथ से निकलती जा रही हैं। गया वक्त कभी वापस आ नहीं सकता, क्यों तारिक भाई? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब देखें अब 16वें ओवर में है, ये 90 प्लस थे 11वें ओवर में। इमामुल हक का स्ट्राइक रेट फिर 118 पे आ गया। 8 विकेटें अभी हाथ में, 8, 4 ओवरों में 24 रन किए, 8 विकेट्स इन हैंड। अब हम चीखे नहीं मारेंगे कमेंट्री बॉक्स में, सर नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा? पहली गेंद पर छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद सिर्फ 1 रन बन सका है। अच्छा ओवर किया है मीर हमजा ने, बिल्कुल उन्होंने आर्म फ्री करने का मौका नहीं दिया इमामुल हक को और हारिस सुहेल को भी उस छक्के के बाद। लेकिन इस बार थोड़ी सी विड्थ मिल गई और हाथ चलाने का मौका था। अच्छा स्ट्रोक खेला इमाम ने। 15वें ओवर का इख्तिताम इस शानदार चौके पर हुआ, 118 पर 2। for 2, 4 overs to go. That's 24 more deliveries. Got 11 in the previous over.
But the question still is that is it enough? If they get to 100 and say, so to speak, 140 plus, like in the first game, can they defend that with their bowling? As Mahmud Haq hitting the boundary on the last ball of the previous over. They need more shots like that. In my opinion, they need to score 160 plus, 170 plus. This is not an easy wicket to bat on, but if you have got some runs, it's easier to accelerate. Also, the dew factor we've been highlighting and talking about, it wasn't that much last night. I don't know how the situation is at this point in time. I'll probably get you the latest on that. Use the pace, move away, flash your bat, and that's a good effort from Azam in the deep. Khurram is asking, not Khurram, sorry, Sohail Khan. Have a look at that shot. Inside out, clearing the leg. There's a deep point there. This very good fielding by Azam Khan. Lucky he didn't land on that bottle. That could have been trouble for him, but that's really good. Nice effort, presence of mind. He jumped in the air and he slapped it back, got rid of the ball before he lands back. His overall technique in fielding is good. He dives well. The only thing is the ground covering. But otherwise, his technique is sound. Should be one. Danish Aziz, the fielder. This is a slow partnership in the middle overs. 26 runs off 22 balls with 8 wickets in hand. It's extremely important that they accelerate this from now. They need, if they can score 10 runs and over, it's 156, but they will need more than that. Sohail wants the field to be perfectly as he has desired, because the next delivery he wants a bit more protection on the offside inside the circle. Sweeper cover coming inside. Got a deep point and a third man on the offside. And he's got him. Haris Sohail trying to make room for himself. Moves back a little too much. Good ball, smiling faces. And Sohail Khan has been very handy for Sindh. He's been amongst wickets. Look at this change of pace, back of the hand, slow one, right on the money. Sohail Khan, he's used his experience really well. I think the batsman was expecting a short ball with the kind of field setting, but an absolute great delivery, great variation from Sohail Khan. 120 for 3. Next stick, please. Middle dekna, please. Bismillah Khan now. Promising hard hitter. He's been around for a while. Can hit the ball a long way. Sarfaraz won't mind singles here, as long as there are no misfielding or drop chances. Good recovery from Hussain. Sarfaraz will be happy with his bowling and fielding up till now. They didn't give too much away,
and with Imamul Haq now set, Balochistan would be looking to accelerate it, not losing too many wickets along the way, but making the most of these last few overs. Third man and a deep backward point. And there's a sweeper cover as well. 3 men guarding the offside boundary. We've got an extra cover and a mid-off. Here's the wicket, back of the hand, and top of off stump. Gave himself way too much room, and again lack of pace. Missed it completely. Long on been pushed back. Deep square leg. A very passionate cricketer, Sohail Khan, enjoys his cricket, whether it's domestic, international. He's always passionate. Wide. Oh! Sohail Khan had a shock of his life. Wow. He's very animated. Like you just said, he's very passionate. He's animated. Have a look at this. It was a slower one. Ouch. That's a very strict call. That's a very, very strict call. He must be disappointed. Everything in that was the bowler's reaction. That was wow. That's a bad ball. That's a bad ball. That's just a gift. On the legs, no protection in the deep. And call Sarfaraz to walk down and have a word with him. Losing his temper after a bite that was given by the umpire down the leg side, flick it over from his hips. Imamul Haq, a boundary for Balochistan. Last ball of the over. 126 is given a boundary, otherwise good enough. Tough call on the wide. He's got a wicket, 3 singles. Well done. Direct hit. No. Oh, he got overthrows. No one backing up. That's unbelievable. He's gone for 4. Sarfaraz has got his face in the gloves. He can't believe it. Just can't believe it. Not the best 3 balls Sohail Khan would like to forget. There's no one covering the stumps. No one. That's unacceptable at this level. Very late reaction by the fielder. He knew there was no one at the back covering him. Important runs. Important runs for Balochistan. Crucial runs leaked by Sindh. 131 for 3 after 17. Got a few skyscrapers there. Been more consistent in the last 3 overs that we've watched. 131 for 3. 18 more balls to go. They've done well, Sindh, but they need to pull up their socks. They can't let go of these overthrows and everything. Good ball that. Coming back for the second. This should be interesting. No, the throw is wide. Not a good throw there. Nothing in there, no support for the bowler. Hasnan got Babar Azam out twice. There was no one to catch. Here also, it was just a single in the deep, but 2 runs taken, slow to the ball and not a very good throw. Yeah, you pick on your fielders. Saw the opportunity. The throw, you expect it to be on top of the bails, flatter. Well ball again.
following the batsman. Imam taking a single, taking his own score to 67. 3 runs from this over. Now they can easily cross that 160 mark if they utilize the coming overs well. They can even push themselves with 1 good over to 170 also. Once your onside field, it's quite spread out. There's a square leg there. Will that be cut off? Will that be cut off? No. He just runs over it. Once again, this could have been a better effort from Sindh in the deep. The sweepers need to be effective fielders here. You need to have your best fielders on the boundary at this time. Just placing it in the gap, easy pickings, easy 4 runs for Balochistan. Sherjeel on that occasion couldn't make it in time. It's in the air. It's going to be there for a while. The fielder running after it, but it's gone. Has it gone all the way? Yes, it has. The umpire signals a maximum. For a moment, I thought that Anwar Ali was in the game with it, but no, that's a maximum. Good over this again. Good over. As mid-off fielder was up, it was the right thing to do. Good intention. And look at Anwar Ali. He has already been out twice. He's already been out twice because of the shoulder, but he's not giving a second thought, giving all 100% for his team. 10 more trees planted by PCB and Tuck after that maximum. Fallen wide and another boundary. Wow, now this is just getting a little too much for Sarfaraz because he wants them to ball into the stumps. Good batting there, just using the pace. So it's 2-1, 4-6, 4. That's how the over is gone. Only 5 balls from this over, 17 already in. This is the over Balochistan needed to shift that momentum, get into making sure that they can have a 150 plus score. They know all the fielders on the offside right now. They have less ground covering and just placing it in the gap, easy pickings again. Last ball of the over, you got 2 more to go after this and they're already approaching 150. You come to think of it, when you and I came into the commentary position, they were 118. In no time, they've almost reached 150. End of the over, 18 gone. They've added 30 odd runs in just 2 overs, and that is going to hurt Sindh because every run being added from here is very valuable. We saw that 146 to win the match in the afternoon was a tough ask. Southern Punjab was left behind by 5 runs. So and when you get those overthrows with no backing up, the fielders not being able to cut the ball off in the deep, that's where you feel as a bowler. Full toss, same result. Sarfaraz Ahmed is begging the bowlers to make sure that they can put in the Yorkers. 150 for Balochistan. Just easy shot, easy 4 runs for Imam. Not the best delivery in death overs. This is not what is expected of a senior bowler like Anwar Ali. Anwar Ali could probably try and come around the wicket and box him in. Because they're running across him. It's providing him the width. Your backward point is inside the circle.
Let's have a look. How does Anwar go? This time played on the onside. Nicely done. Good wrist work. Well stopped in the deep. That's the kind of commitment you need. Danish Aziz and Hassan working in tandem. Good teamwork here from the fielders. One just made sure that he stopped the ball. Other one was quick. He was running in, making sure that they are working as a team, saving those runs. With these runs, Imamul Haq has become the leading run scorer of this tournament. Oh, he's always going to struggle with that full. It just puts bat onto it. I really expected the fielder at short third man to cut it off, but not to be, and tough boots to be in if you're Sarfaraz. In T20 cricket, you cannot be standing even if you're at short third or short fine. You need to be bent, walking in with the bowler. This needs to stop, and if you're bend, you're low, you have a good low position in fielding, walking in, there's a better chance for you to reach such balls. Third game in a row for Sindh. Now they are trying to back that area up with two fielders, short third man, and there's a wideish gully, but there are two guys who are trying to stop this. Now Anwar probably can afford to bowl full and wide. Yeah, there. And it's been bisected. And well stopped. There's Mir Hamza there. Batsman come back for two. Quite a lot of panic in the field at the moment. Making sure, making three fielders behind cut, trying to take the ball away from Imam. Very good effort in the field to save those extra runs here. They have leaked a lot of runs in these last 3 overs. They were going really good till the 16th over. Now that extra man has been removed. He's been brought to short fine leg. We've got one more man down outside the boundary. Who is that? Misfield, the chase by Hassan and that's Taha. Two more. With 3 consecutive matches on 3 consecutive days, these last 4 overs, we have seen the energy of Sindh going down. Players not bending enough, not staying low enough. Misfielding, not the best of shows. In the last 4 overs, they've conceded 54 runs. Last ball of the over. Here you see the difference. Concede 50 plus in the last 4 overs we've seen. You're asking for trouble when you come out to chase. Quick single. So here we are, 19 gone, 163 for 3. Last over to be bowled. This is what Balochistan have managed. Riding on 83 and still going on. Imamul Haq. Abdul Wahid's 32. They've got 163 on board. This has to be one of the strongest batting performances in the last 3 matches we have seen. A good stable foundation from the top, and if they can just make 15 plus runs from this over, it can be a very good total.
how many runs he scored in that region and how many times Sindh is persistent in bowling him in that area. He just puts bat and that's a boundary. Sindh is not learning their lessons. Sarfaraz has his head between his hands. He doesn't know what to say to the bowlers. They are feeding him in the area that he has been scoring these runs. If we can see the wagon wheel, we can see how many runs, at least 20, 25 runs he has been scored in this area in the last 20 balls. He's just marshalling his men, Sarfaraz. That's better. Angling it in. That's better. That might work as well. Not taking a single here. They need to be running, making sure that the team gets the extra runs. Bismillah Khan is 15 off 5 balls. Strange tactics here. Once again, there's so much movement going on at the moment in the field. It's hard to catch up on which part to mention first. I was looking at deep mid-wicket and suddenly fine leg is coming in. Here comes a snail. Again, asking for 2. This is a good pick up and throw. There's a chance if the throw is good. No, it just dies on its way. Not flat enough. Imam is making sure he has a good chance for his century. Ran the first one extremely hard, refused the single on the last ball. And the throw was terrible. It just came to Sarfaraz after a couple of bounces. He expected that one to be flatter, quicker. You don't want to be a bowler from Sindh with this kind of fielding. Again, asking for 2. That's the call. That's Hassan or Taha. .22. 2 more balls to go in the innings. 171 for 3. Now Balochistan will fancy their chances because this is looking good. 50 partnership now of 20 balls. I'm pretty sure bulk of the scoring is Imam ul Haq. 91 not out. Bismillah 15. 35 of 14. That's the contribution from Imam ul Haq. One batsman getting a big 90 and the score crosses 170. In all this, you'd say that this was a good ball. Right in the block hole. Didn't allow Imam to go for the big hit. He probably would have liked to get to his 100. 52 of 20 balls. See the contribution, 36 of 13. Bismillah also playing a cameo, 15 of just 5 balls here. Let's see what he can do from the final ball of the innings. I haven't seen him on strike for a while now. He only received 5 deliveries. It's been Imam all the way. Single to end the innings. So good over. 20 gone. 173 is what Balochistan have managed. With Imam not out, 92. And this last over getting them 10 runs. But the problem, Sana, here is that they've given way too many runs in the last 5 overs. They did all the hard work in the field, in the power play, in the middle overs, and in the last 5 overs, they've just given 66 runs in the last 5 overs.
giving that advantage to Balochistan, shifting that momentum towards them. Now it will depend heavily on the power play, how Khurram Manzoor and Sharjeel Khan approach that power play. Now it's up to Sindh batters to win this match for them. It was 118 with 4 overs to go. That's what they had now, 173. Look at that. Imam ul Haq 92 not out. And in the end, Abdul Wahid's 32, Bismillah Khan 16 not out. Good score. Bowling, they did well, but I said 66 in the last 5. That's the problem there. Look at that. Sarfaraz didn't bowl. Sohail Khan 1, Anwar Ali 1, and Hassan Khan 1. These are the 3 wicket takers. They've been on the expensive side Sindh all through the tournament. So the target, 174 to win this match, and that's what Sindh needs when they come out to bat in not very long from now. We'll be back. Don't go away. Welcome back once again, and let's watch what happened in the first innings, as it was Balochistan was put into bat. Imam ul Haq opened along with Owais Zia, and they couldn't get as many runs as we've seen up till now in the power play. That's an opportunity missed. Owais Zia's Danish Aziz put him down. Then it was Anwar Ali who came into the attack, and he looked good, and after being hit for a couple of boundaries, he had the last laugh and got rid of Owais Zia, caught by Sarfaraz, and that was the first wicket. Then there was a long partnership, and after that it was Wahid who was dropped by Mir Hamza, cotton ball. That's been
the usual from Sindh. We've seen on many occasions. Hassan Khan was targeted for the big hits. Inside out, over extra cover. Imam ul Haq looked very good today against the fast bowlers. What a shot that was from Wahid, ramp shot. This was the region that Imam ul Haq targeted throughout his innings, and he got most of his runs from there. Wahid was then stumped because he was trying to plant his bat while he was outside his crease. Hassan got that wicket for himself. Sohail Khan looked good. He bowled well, but at times he was wide and punished. The left-hander was very good on the offside behind the square. He also hit some big ones in the mid-wicket region. Then over cover, anything full, and he punished it. Slower one worked. Haris Sohail was bowled by Sohail Khan, the back of the hand ball. He probably just wanted to help out Imam with his knock. Anything on the leg side, punished by him. Bismillah played a good cameo, 15 of 5. But it was Imam ul Haq who was doing bulk of the scoring from the other end. He got lots and lots of full and wide deliveries outside the off stump, and he dispatched them one after another down to the backward point region boundary, and very consistently got all those runs. Last ball was a single, and in the end it was 173 that Balochistan managed after being put into bat first. So Sindh is right here. 174 is what they require in the 20 overs. We'll come back to you shortly. Nicely done. Beautiful shot. That's a boundary to start. And he's got him. रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पर 174 रन की ज़रूरत है सिंध की टीम को मुसलसल दूसरा मैच जीतने के लिए। और ये दोनों अंपायर्स हैं एहसन रज़ा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल मैचेस भी सुपरवाइज कर चुके हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और उनके साथ साकिब खान है। और ये बलूचिस्तान की टीम जिसे 173 का दिफा करना है, हालांकि सिर्फ 3 ही विकेटें गिरी, लगता था कि इससे ज़्यादा रन्स बन सकते थे इस पिच पर। वसीम, यहाँ पे अब बिग क्वेश्चन है कि ये इनफ हैं। हमने देखा है कि दूसरे मैच पे बॉल गीला भी होता है, हमने सुपर स्वॉपर भी देखे, अभी उन्होंने रस्सी भी लगाई, फिर उन्होंने
आखिरी ओवर में स्कोर हुआ, हर बहुत सारे बॉलर क्रॉस द सीम पकड़ रहे थे बिकॉज सीम गीली थी, बॉल स्लिप हो रहा था। तो कम से कम जब आपके हाथ में विकेटें होती हैं तो आप ज़्यादा स्कोर करने के लिए जाते हो। 10 एन ओवर 11 एन ओवर प्रॉब्ली इज़ नॉट गुड इनफ। अब देखना ये है कि सिंध इसको कैसे किस तरीके से लेता है। अगर इनमें से एक भी प्लेयर चल पड़ा, खुर्रम मंजूर या शर्जील खान, तो गेम विल बी ओवर। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम व्हेन यू बोल सेकंड इस ग्राउंड में जहाँ ड्यू फैक्टर होता है। अब उनका एंड में स्ट्राइक रेट 153 आ गया इमामुल हक का, मगर प्रॉब्लम मुझे थी जब 11 ओवर में उनका 48 के 45 था, तब उसके 12वें 13वें के बाद उनको तेज़ होना चाहिए था और सिर्फ 8 विकेटें तब हाथ में थी। शर्जील खान बड़े अच्छे स्ट्राइकर हैं, सिंध की टीम को इनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। इनसे सिर्फ एक ही शिकायत रही है इनकी क्रिकेट में वापसी के बाद कि इतने ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा नहीं कर सके। हालांकि अभी भी क्लीन स्ट्राइकर हैं, तो फिटनेस पर काम होने वाला है। और बिल्कुल वही बात कर रहे थे दोबारा इमाम की इनिंग्स की और बलोचिस्तान की इनिंग्स की। जब आप एंड तक खेलते हो एज एन ओपनर, आपका स्ट्राइक रेट तो 153 का आ गया, मगर आपके दो जो पावर हिटर जिनकी स्पेशलिस्ट हैं, अमाद भट्ट हैं, बिस्मिल्लाह खान है, अगर वो थोड़े जल्दी आए होते तो आपका स्कोर शायद 200-210 होता। तो ये चीज़ें सारी सोचने वाली हैं एज अ बैट्समैन जब आप बैटिंग कर रहे होते हो कि मैं अब 11वें ओवर में आ गया, मैं यहाँ अब चांस लूँगा, 15 ओवर तक चांस लूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि अपना 80 वहाँ करूँ 40 गेंदों पर। हसन रजा यहाँ पर प्ले का इशारा देने वाले हैं। उमर गुल तैयार हो रहे हैं पवेलियन एंड से बॉलिंग करने के लिए। ये आखिरी टूर्नामेंट है उमर गुल का। एक स्लिप के साथ आएंगे खुर्रम मंजूर को। शॉट वाइड गेंद थी, इसका फायदा नहीं उठा सके खुर्रम मंजूर, सीधा फील्डर को खेल दिया। ये उनकी अपनी फेवरेट शॉट है खुर्रम की, बड़ा ज़बरदस्त कट खेलते हैं, अगले गेंद को भी कट अच्छी मारते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इतने ज़ोर से उनको जब उनको देखा शॉट बॉल और वाइड इतना ज़ोर से मारा कि आई थिंक एक हाथ उनके बल्ले से स्लिप हो गया। खुर्रम मंजूर के लिए ऑफ साइड में स्लिप के अलावा 4 फील्डर दायरे में हैं और एक को वाइड थर्ड मैन पर पोस्ट किया गया और इसे एच किया और आसानी के साथ कैच ले लिया बिस्मिल्लाह ने। ये गेंद उछली भी, हल्की सी मूवमेंट देखने को मिली ऑफ द विकेट। बिल्कुल थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिला, थोड़ा सा पेस भी थोड़ा ज़्यादा था उमर गुल का, एक्सपीरियंस काम आया, बॉडी के करीब बॉल था, मे बी कट वाला बॉल नहीं था थोड़ा वाइड हो गया, स्विंग जैसे आपने कहा हुआ और हल्की सी एज और बड़ा आसान कैच कीपर का, और पहले कामयाबी मिली बलोचिस्तान की टीम को। खुर्रम मंजूर लगता था कि पहले शायद ये बलूचिस्तान के खेमे की तरफ चल पड़े, अब ये जा रहे हैं सिंध के डग आउट की तरफ। 0 पर 1। हासिल की इनफॉर्म बैट्समैन की विकेट हासिल की उमर गुल ने। सेंचुरी बना चुके थे खुर्रम मंजूर और 200 से कम स्कोर था। ऐसा स्कोर आमतौर पर आइडियल होता है इस तरह के बैट्समैन के लिए, ऐसे शफीक को जल्दी आना पड़ा। सारा दारोमदार सिंध के इनिंग्स का शर्जील खान पे है, वो कैसा स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि ये शाम का मैच है, जल्दी विकेटें लेना होंगी बलूचिस्तान को, वो ये जानते हैं। बैलेंस नहीं था इस शॉट में, एकदम बॉल थोड़ा वाइड था, शॉट भी था और बिल्कुल ठीक शॉट मारा मगर थोड़ा दूर हो गया और इनका वेट पीछे की तरफ आ गया बजाय के बॉल की तरफ जाता। बुल ने अंपायर की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं, उनको यकीन था कि बैट्समैन खुद ही चल देंगे। एज की आवाज़ तो ऊपर तक आई थी बस यहाँ कमेंट्री बॉक्स तक बहुत बड़ी एज थी। यहाँ एक एज की आवाज़ जो थी
वो होबर्ट के मैदान में भी हर एक ने सुनी थी, एक शख्स के सिवा। बिल्कुल बड़ा एक ऐसी सीरीज़ थी कि अगर वो टेस्ट मैच हम जीत जाते तो शायद वो हम सीरीज़ भी जीत जाते, मगर ऑब्वियसली ऐसे डिसीजन होते हैं, कोई जान के नहीं करता। उसने अपनी किताब में बाद में लिखा जस्टिन लेंगर ने कि हाँ मैंने निक मारी थी। मैंने उससे कहा मिला, मैंने कहा 10 साल बाद तुझे ख्याल है कि तूने निक मारी थी। वो कहाँ गया तेरा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि इफ़ यू एच द बॉल यू गॉट टू वर्क जेंटलमैन्स गेम। आई सपोज जो आंसर होता है कि हम प्रोफेशनल एंड देयर अंपायर्स देयर दे हैव अ जॉब टू डू। काफी आगे चले गए हैं। लकीली शर्जील ने नो 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 कर दिया, नहीं तो ये आधी विकेट भी रह जाना था दोनों में से किसी एक ने। सीधा फील्डर के हाथ में बॉल था। आपको पता होना चाहिए, बड़े एक्सपीरियंस है असद, नो डाउट, कि आपका जो सामने का बैट्समैन है उसकी रनिंग इतनी तेज नहीं है जितनी इनकी है। उन्होंने शर्जील ने बर वक्त उनको वापस भेज दिया। ऑन साइड में फाइन लेग को आगे बुलाया गया, स्क्वायर लेग के फील्डर को डीप किया गया है। ये गेंद जरा नीचे रही। खुरम मंजूर जब बैटिंग कर रहे थे तो गेंद उछल रही थी। बिल्कुल विकेट मेडन, एक ओवर पे एक विकेट और कोई स्कोर नहीं। आकिफ जावेद मीडिया सेंटर एंड से बॉलिंग करेंगे, जो कि आउट स्विंग कर सकते हैं शर्जील को, इसलिए स्लिप मौजूद है। थर्ड मैन की फील्डर फाइन है। बहुत अच्छी आवाज़ आती है इस पिच पर जब गेंद बल्ले के मिडल में लगती है, जिससे टू बाउंस का पता चलता है। जी बिल्कुल इवन बाउंस है, बल्ले पे गेंद आके लगती है। यू नो क्रेडिट देना पड़ेगा मुझे, गेंद मैं बार बार तारीफ कर रहा हूँ ग्राउंडमैन की जिस तरीके से उसने पिचेस बनाई हैं पिंडी की। यू नो बोनस के लिए भी कुछ है अर्ली ऑन, फिर अगर अपसेट होते हो तो आप शॉटें भी खेल सकते हो, पुल भी कर सकते हो, कट भी, ऑन दी अप भी। और स्पिनर के लिए थोड़ी आई सपोज इतनी हेल्पफुल नहीं है, वहाँ पे स्किल्स का काम आता है। और ये गेंद ऐसी थी जो बिल्कुल सजावार थी, आंखें चमक उठी शॉट और वाइड देखते ही शर्जील की। बड़ा उम्दा तरीके से इस शॉट को खेलते हैं ये, थोड़ा सा भी गेंद पीछे हो, थोड़ा सा वाइड और कट अंदर भी मारते हैं पॉइंट के, बाहर भी मारते हैं। कंट्रोल है इस शॉट पर इनको, और डेंजरस प्लेयर है नो डाउट। गेम का पांसा पलट सकते हैं अगर इनकी इनिंग ये रह गए 8-10 ओवर तो। और ये आई थिंक इसका प्लस ये है कि अपनी गेम खेलते हैं, सिचुएशन कोई भी हो। फिर कट शॉट खेलने के लिए गए, ये गेंद तेज सी, स्टीप बाउंस देखने को मिला। बिल्कुल, और बड़ा इंप्रेस किया है इस यंगस्टर ने भी, आकिफ जावेद ने। पेस भी है इनके पास, बाउंस भी है, और अभी यंग है, इनएक्सपीरियंस है, मगर न फड़क जिसे कहते हैं हम पंजाबी में नज़र आ रही है इनमें, स्पार्क नज़र आ रहा है। सिर्फ 20 साल के हैं। वसीम जब ये रनअप शुरू करते हैं तो अगर गौर से देखें तो आपके साथ खेलते थे, यहाँ रावलपिंडी में भी खेले थे सलीम जाफर, ये उनकी तरह एक बार उछल कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सलीम जाफर भी हल्का सा ये जंप लेता था। क्या ज़बरदस्त डिलीवरी, लुक एट द कैरी, देखें कीपर के, और स्लिप कितना पीछे खड़ा है, स्लिप के पास इतनी दूर खड़ी है, स्लिप के आप सिंगल भी ले सकते हो। दैट शोज़ के पेस है इस लड़के के पास, नो डाउट। बस खेलेगा फर्स्ट क्लास, इम्प्रूव होगा। ये सारे यंगस्टर्स जो हमने देखे हैं नेशनल T20 में, मूसा ले लें, इलियास ले लें, इसको ले लें, शहजाद को ले लें, खुरम शहजाद को आज यहाँ के एक मकामी अखबार में खुरम मंजूर लिखा हुआ था। और उन अखबार वालों की एक ही जॉब थी कि प्लेयर का नाम ठीक लिख दो भाई। ब्यूटीफुल डिलीवरी, क्या ज़बरदस्त लेंथ, क्या ज़बरदस्त पेस।
और मज़ा आ रहा है इसकी बॉलिंग देख के। नई बॉल का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो खिंची हुई लेंथ पे मार रहे हैं। एक चौका पड़ा, थोड़ा सा वाइड बॉल था, उसके बाद अपनी लेंथ को दुरुस्त किया उन्होंने। मुझे बड़ी दफ़ा अखबार वालों ने लिखा है, क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं कराची के मेयर वसीम अख्तर साहब या जो भी हो रहा है, नाम तस्वीर मेरी और नाम उनका, काफ़ी दफ़ा हो चुका है ये। ये वाइड गेंद थी, विकेट कीपर ने सरतोड़ कोशिश की रोकने की, लेकिन मौका नहीं था बिस्मिल्लाह खान के पास। वाइड के 5 रन हो गए। ये थोड़ा प्रेशर पड़ता है बॉलर पे भी, जब आपके पास टोटल तो ठीक ठाक है ऑन स्कोर कार्ड 173 173, बट जैसा कि बताया कि गेंद गीला होगा और अगर बैट्समैन सेट हो गए तो मर्जी से खेल सकते हैं। स्पिनर के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। वसीम, कई बार इस स्लिप के फील्डर्स से बात होती है तो लेफ्ट हैंडर पर उतने आदी नहीं होते स्लिप फील्डिंग करने के जितने कि वो राइट हैंडर पर होते हैं, लेकिन विकेट कीपर तो आमतौर पर आदी होते हैं लेफ्ट राइट हैंडर। बिल्कुल, वो प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। जब आप प्रैक्टिस करें डाउन लेग साइड, दूसरी वाइड इन अ रो, वो आपको जब स्लिप फील्डिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कभी लेफ्ट हैंड बैट्समैन को कहीं यार स्लिप करा दे, कभी राइट हैंड को, तो उससे आपके एंगल की समझ आ जाती है। बाहर के मुल्कों में आप देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, न्यूजीलैंड देखें, इंग्लैंड देखें, आई मीन उनके फील्डर चाहे राइट लेफ्ट हो बैट्समैन, चाहे लेफ्ट हैंड हो, चाहे सीधे हाथ से, चाहे दोनों हाथों से खेल रहा हो, या तीनों हाथों से खेल रहा हो, वो ड्रॉप नहीं करते कैच, बिकॉज वो प्रैक्टिस करते हैं। और मोस्टली बैट्समैन देखे हैं मैंने स्लिप्स में, बिकॉज उनकी रिफ्लेक्सेस उनके तेज़ होते हैं बॉलर से। दैट्स वाई बैट्समैन आप ज़्यादा देखते हो स्लिप में। इसे फाइनल की जानिब खेला 4 रन के लिए और अंपायर ने इसे लेग बाई करार दिया। ओवर जो कि बहुत अच्छा जा रहा था, इसका इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ, ऑफलाइन हो गए दोनों बार लेग स्टंप की तरफ। ये फाजिल रन उन्होंने कंसीड कर दिए 8, 2 के बाद 15 पर 1। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर पहला ओवर मेडन उमर गुल का, उसके साथ विकेट भी, और दूसरे ओवर में अच्छा ज़बरदस्त पहली गेंद पे चौका खाया, उसके बाद क्या 3 डिलीवरीज की और फिर इनएक्सपीरियंस, एक वाइड बॉल पे 5 हुए, फिर एक लेग बाइक का चौका हुआ, 2 वाइड हुए, सो 15 हो गए। सो प्रेशर उतर गया ऑपोजिशन से बिल्कुल। उमर गुल ने मिड ऑन की फील्डर इमामुल हक को इशारा किया है कि ज़रा सा वो वाइड हो जाएं। यहाँ पहले 6 ओवर्स में का सोचना होगा, यहाँ रन्स बनाना होंगे आपको पहले 6 ओवर्स में। तकरीबन 45 रन्स, अगर 50 तक नहीं भी पहुँच सकते, क्योंकि पावर प्ले जीतना बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के मैचेस में। अक्सर हम देखते हैं कि पावर प्ले जीतने वाली टीम ही अगर वो रन्स को चेस कर रहे हैं तो वो मैच जीत जाते हैं। बहुत नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं उमर गुल। 12 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया है, लेकिन बहुत वक्त ले रहे हैं आजकल अपना ओवर मुकम्मल करने में। पावर प्ले की बात ठीक ही, हमारे जो कोच डीन जोन्स अब जो दुनिया में नहीं रहे, मेरे बड़े करीबी दोस्त थे, एक शौक था हम सब के लिए, हमारी टीम के लिए। आई थिंक पूरे मुल्क को, पाकिस्तान उनको पूरा बड़ा प्यार करता था, वो बड़े पैशनेट थे पाकिस्तान
के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। वो पहले कोच थे, जब PSL का पहला ड्राफ्ट हुआ वो वाहिद फॉरेनर थे जो आए थे पाकिस्तान में, और बड़ा उन्होंने इन्जॉय किया था और बड़ा प्रमोट करते थे प्लेयरों को भी, कंट्री को भी। वो कहते थे कि जो पावर प्ले जीत जाता है टीम, वो साइकोलॉजिकली उस मैच में थोड़ा आगे जा, जरूरी नहीं कि वो मैच जीते, बट साइकोलॉजिकली प्लस आ जाता, कॉन्फिडेंस आ जाता है इफ़ यू विन द पावर प्ले। अब पहला मैच जो था नॉर्दर्न का वर्सेस सदर्न, नॉर्दर्न ने 6 ओवरों में 29 पर 2, और चेज़ में जब वो करने आए सदर्न पंजाब, उनका 25 पर 2। ठीक है, विकेट पे थोड़ा बॉल सीम हो रहा है, इतनी भी मुश्किल विकेट नहीं है जिस तरीके से। इससे अब ये पता लगता है कि आप इनकी टेक्निक्स अच्छी विकेट के लिए, शॉट्स मारने के लिए अभी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई। फ्लैट विकेट पे तो ठीक है, जो मुल्तान की विकेट आपने 200 देखा, 200 चेज़ हुआ, यहाँ भी 200 चेज़ किया सिंध ने, ये सिंध के खिलाफ हुआ इनफैक्ट। इस पिच का एक करैक्टर है जो कि होना चाहिए हर सेंटर की पिच का, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कई ऐसे टेस्ट वेन्यूज़ हैं जिनकी पिचेस का वो करैक्टर नहीं है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एक ज़माने में स्पिन होता था, है ना करैक्टर। फैसलाबाद, नेशनल स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम, पटाखा विकेटें, पटाखा 15 पर 1, और एक और ज़बरदस्त होगा। सिर्फ 1 रन हुआ है अभी तक इस ओवर में, सो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इज वर्किंग फॉर उमर गुल। हम देख रहे हैं इस एंड से कई गेंदें नीचे रह रही हैं उमर गुल की। अलग नई गेंद उनके हाथ में, ओवर मुकम्मल हुआ और एक और मेडन ओवर था 15 पर 1। खुरम शहजाद अब बॉलिंग करेंगे, जो कि अच्छा इजाफा है इनके बॉलिंग रैंक्स में बलूचिस्तान के। अरे सुहेल बहुत मुतहर्रिक रहते हैं, कप्तानी करते हुए बहुत तजुर्बा भी है सियालकोट स्टैलियंस के दिनों से। ये नए नए थे जब स्टैलियंस की टीम कामयाबियां समेट रही थी। उनसे ज़्यादा कोई T20 जीते हैं सियालकोट स्टैलियंस की टीम, कंसिस्टेंट थे, हर साल जीतते थे, बड़े अच्छे प्लेयर थे उनके पास। 6 टूर्नामेंट जीते हैं। थोड़ा बॉल लो रह रहा है आई सपोज। 15 पर 1, हम तीसरे ओवर में हैं, टारगेट है 174 रन का। अभी आप हद से ज़्यादा बैटिंग पिचेस का जिक्र कर रहे थे, लाहौर, कराची और फैसलाबाद की पिचेस का, लेकिन आपकी जो बॉलिंग औसत है टेस्ट क्रिकेट में वो 22 है पाकिस्तान में। कुछ बताइए अपनी कामयाबी का राज। आई सपोज मेरे से बेहतर औसत होगी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम मेलकम मार्शल की, उसकी 21 के एवरेज है मज़र मेरे ख्याल में, पाकिस्तानी सरजमीन था मुझे जी, इसीलिए मैं उनको दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर मानता हूँ। फील्डर के पास सीधा और सिंगल फंबल हुआ। आई थिंक मेरी जो थ्योरी थी, ऑफ कोर्स से सीखे अपने बड़ों से, जावेद मियादाद, ग्रेट जावेद मियादाद से, इमरान भाई से, कि विकेटों को अटैक करना। अगर नहीं कैरी कर रहा स्लिप तो देन ट्राई जस्ट विकेट्स पे अटैक करो। अगर लो भी है पिच तो लो पिच पे मैं ज़्यादा इंजॉय करता था, मुझे पता था कि मिस हुआ तो लेग बिफोर है या बोल्ड है, और उसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए होती है बड़ी। अगर नहीं हो रहा तो वेट करते रहो, वेट करते रहो। अब टेस्ट क्रिकेट में कई दफ़ा स्पेल आते हैं, स्लो विकेटों पे आते हैं, मिलती हैं आपको कि पार्टनरशिप लगी हुई है, तो बॉलर को क्या करना चाहिए वहाँ पे? बॉलर को सिर्फ कंटेन करना चाहिए। उसे चाहिए कि मैं 10 दिन में 20 ओवर करूँगा तो मैं 40 रन दूंगा, 40 से 45 या 50 भी कर लें तो फिर भी ठीक है, 2.5 इन ओवर, ताकि आप आपको अगर 20 में आपको 80 हो गया है और विकेट भी नहीं मिली, ये देखिए क्या डिलीवरी, अनप्लेबल, ओपन अप कर दिया शर्जील को।
जी हाँ, और आपकी दिलचस्पी के लिए बताते चलें, ये अच्छी डिलीवरी थी। इस मरतबा बाल बाल बचे, कोई जवाब नहीं था शर्जील के पास, ना बैक फुट पर आ सके ना फ्रंट फुट पर जा सके। बिल्कुल लेंथ ये थी और ब्रिस्ट मारा आके। आई थिंक ये आज के दिन का बेहतरीन गेंद हुआ ये। ऑल्दो कहते हैं अच्छे गेंदों पे, ऐसे गेंदों पे आप इतना अच्छा होता है कि एज नहीं लगती, बीट हो जाता है बैट्समैन। वही किया, वही हुआ शर्जील के साथ। एक और आला डिलीवरी, इस मरतबा भी शर्जील लाजवाब होकर रह गए। गेंद हवा में मूव हुई, उसके बाद ऑफ द विकेट भी। उनको रूम नहीं दे रहे, उनको पीछे नहीं दे रहे, उनको उस लेंथ पे मारी जा रहे हैं। अब ये है बॉलिंग। अब यहाँ से अच्छी एज लग जाए, चौका हो जाए, वो आप हेल्प नहीं कर सकते एज अ बॉलर। मगर इस लेंथ में मारेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे तो अब शर्जील थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो हुआ होगा वो एक आधी गलत शॉट मारने की कोशिश करेगा। और मैं शर्जील की जगह होता या कराची सिंध का होता तो मैं बताता कोई बात नहीं, ये स्पेल गुजरने दो, विकटें हाथ में रखो, स्पेल गुजरने दो, ट्राई टू रोटेट द स्ट्राइक, आउट नहीं होना। इसे खाली जगह पर खेला, 2 रन बनने चाहिए। फील्डर अहमद भट्ट वाइड थे खासी हद तक लॉन्ग लेग पर, लेकिन इतना नहीं कि दूसरा बचा पाते। तो वसीम अकरम के औसत की हम बात कर रहे थे। पाकिस्तानी सरजमीन पर 154 विकेटें ली हुई हैं वसीम अकरम ने, और उनमें से 100 LBW या बोल्ड हैं। जो बात आपको बता रहा था, जो मुझे याद है, वो ये याद थी कि मैं कोशिश करता था, वकार की भी यही कोशिश होती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विकेटों पे गेंद मारें या पैडों पे गेंद मारें, बिकॉज स्लिप का पता नहीं था कैच होता है नहीं होता। इस बार कॉपी बुक स्टाइल में डिफेंड किया, बिल्कुल अपनी निगाहों के नीचे शर्जील ने। 4 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 18 पर 1। $18 for 1 after 4. Still that slip in position. Wow. He's been so consistent with that carry, that extra bit bounce that he's getting, Aqib Javed. It's just that he's not finding that outside edge. Nice space, nice bounce. Sachifi was surprised. There must be something in the pitch. Every team has struggled in first 6 overs. Yeah, we've seen if the new ball handled well can yield desired results for you. It starts talking, it starts asking questions to the batsman. The only difference here, the couple is being attempted. The only difference is that what we saw in the other strips here in Pindi, power play was still slow, but then later on, once the newish ball gets a little older, then scoring was very easy, hardly anything for the bowlers. But today, in the 3 innings that we've seen, it's been a tough run for the batsmen all throughout, unless you really bowl bad. Yeah, by the looks of it, it doesn't look a wicket which has so much moisture in it. It does have a good look, a bit of grass on it, but nothing. Oh. Oh, whoa, that must have hurt. He slipped on his landing foot and he's hurt his knee. And the amount of force that you get on your landing foot, this must be very, very painful. It just tells you the condition out there. It's not really that wet, the outfield. But he has a fast bowler. You've got to keep looking at your spikes. Is he having the long spikes? The physio runs out. That can be extremely painful, Azhar. That doesn't look good. He should take his time. Knees are...
see here coming into his action. Whoa. Somehow he wanted to pull off from the delivery and seems to get his spike stuck into the turf. We may know better from a different angle, but it looks very sore. Physio gives him a bit of treatment. Good to see that he's walking. He's not even limping, but surely it's going to play at the back of his mind when he's going to come back to bowl. That landing area. I'd like to see the replay once again as to how he slipped. Is it the spike? He looks good in rhythm. All good up till here. Now, as the right foot, when he lands there, it just grips in the surface, I suppose. And his boot is also facing towards the slip there. Yeah, he tried to pull out of the delivery. I don't know why he did that, but that front knee, the front leg twisted. And he's rightly going out because you don't want to force something which is sore, and you put more pressure on it and it can cause further damage to that injury. Any ligaments, you tear any ligaments, that can be extremely painful, so he seems to be all right at this point in time. Better to get yourself treated and not take any chances. So who is going to now complete his over? We'll have to wait and see. It's Ahmad Butt. Hopefully for Balochistan and for Akif Javed that injury is not too serious. And he gets the treatment and come back when he's comfortable. And Ahmad Butt is also, we've seen he bowled well in this tournament and he gets some swing, and on this track every pacer is almost getting some help out of it, and this seems to change their mind. Yeah, he marked his run up, came in and just did a bit of shadow bowling, and the captain tells you you're not bowling anymore. Ovais Zia has been given the ball. He's got 4 deliveries to bowl, I suppose. It looks like Ovais Zia is going to bowl seam up. He normally bowls his off spinners, quick off spinners, but he's fancying himself as a medium pacer on this track. It makes more sense to get Ovais Zia in because Ahmad Butt will have his quota of 4 overs on the leg side, and then he will suffer with his. Then somebody will have to bowl his remaining balls. Oh, there's some swing for Ovais Zia. Let's see if he can control that. Quick single. Well, Sharjeel Khan will be looking to make most of it. He's not a regular bowler, Ovais Zia, and runs been hard to come by at the moment
for Sindh. Sharjeel, he's a hard-hitting batsman. He's batting on 6 on. He faced 14 deliveries already. Shots of catch it down the leg side. Nearly deflected to his stumps from his thigh pad. Got to bowl that again. Still 151 of 92. They'll need Sharjeel for sure today in this chase. If they need a quick fire 40-50, he's the man for them. It's a bit surprising that they haven't gone after Vaisya. In power play, probably the best opportunity Sharjeel have got. How many times we've seen a part-timer comes in to complete no one and ends up getting a wicket? Because that's what the batsmen are thinking. Let's get some runs into the over. Not bad away. So yeah, 24 for 1. Khurram Shahzad continuing from the commentary box and got that slip. Sharjeel, will he go after him? He likes space on ball. That's his go-to shot. You ball him around the hip area, he will dispatch you all day long. That's bread and butter for Sharjeel Khan. That's the length he like. And the line was wrong as well. He's so strong in that region. At times he just plays that one into the stands. In that area behind the square on the onside. Tough work for fast bowlers. 3 games on the trot. Good man to have, Yasir Shah at backward point. The fielding will be the key. We have seen the way Northern fielded. That's why they were able to defend a total which everyone thought was not enough. They had a good bowling attack, yes, but fielding really made the difference. Better ball that. Yeah, fielding is important, which is why it takes me back to how Sindh finished off their last 5 overs, gave away 66 runs. And for sure, at least 15 of those were merely because of some half-hearted attempts from the fielders in the deep. Especially for the team whose fitness is not their strength. 3rd game in a row, we had seen some tired legs. And it's in the air, but he won't get there because this is the shot I'm talking about. Once he puts bat onto that, in that region, it just stays hit. Yes, that length again. Thigh height for Sharjeel Khan. He hardly misses out on these kind of deliveries. That's the area he always targets. Yep, told you he likes space on ball, and if you bowl in that area, runs are available. 17 for Sharjeel now. 34 Sindh. For the loss of 1, they've lost Khurram Manzoor. Apesh gone. That's the end.
How many times have we seen batsmen in the top order getting out at mid-off, not completing their shot? And it's Sharjeel this time. You're right, half-hearted shot. It was there to be hit, but he just managed to find that mid-off fielder. There's few batsmen today got out doing that. The power Sharjeel Khan has, he should have used it. He's gone for 17. It's 34 for 2 Sindh. One hard-hitter leaves, the other one walks in, Azam Khan. He's now got this number 4 slot for himself in the Sindh batting lineup. Bit of hard hitting, a bit of sensibility will now be required by Sindh. That's the Sharjeel Khan wicket. Easy work for Haris Sohail. He hangs on his back foot, Sharjeel Khan. He likes the short ball. But if you want to hit over mid-off, you need to transfer your weight a wee bit on the front foot. Nicely bowled, and that finishes the good over, and it's 34 for 2 after 6. So the power play is done with. Now Haris Sohail has the freedom to spread his field out, keep minimum 4 inside the circle. And he's continuing with the Wazir. I think he likes something about him. Leading edge, and it could have gone anywhere, but in the gap this time around. Coming back for 2. That's bad running between the wicket. Just only 2. You must run hard for these. Just leading edge. Nearly found the fielder at point. He want to get rid of Akif Javed's over, I suppose. Lack of pace makes it harder for the bowler now, but for the batsman rather, to play the shots. That's why it was Asad Shafiq who just closed the face of the bat a little earlier than he should have. Got that leading edge. One of those players, Azam Khan, who also likes space, so not a bad ploy to get away. It's either way. It's a funny kind of pace, it's strange to, you're facing a bowler who's probably bowling 115 Ks, and there's no pace on it, so every power you want to generate is just yourself. It's nothing from the bowler. Good shout. That's not a bad shout. Squared him up. He was just trying to work it on the onside. He's enjoying it. And probably just outside the line, maybe. That was the only
Short and wide. And Asad Shafiq, that's his favorite shot. Finds the boundary. Much needed for Sindh. Was there to be hit. So wide. Had that good height as well, sitting right in front of his eyes. Nicely done by Asad Shafiq. With this space, he don't want to be short. That's 4. Just helping it on its way. That's Asad Shafiq for you. You just wait for it and just open the face. So 2 boundaries to end the over. It's 46 for 2. Yasir Shah into the attack. Will be bowling from the commentary box end. Into over number 8. That's going to start. 128 is what's required by Sindh. 78 deliveries. They've got 8 wickets in hand. Easy as you like. It was fuller ball, and Azam Khan just dispatched that towards the side screen. It was just the effortless stroke. How easy he hit that. Sheer power. Nice edge. It's going to be a couple of runs. Might be more if they can run harder for the third. Asad Shafiq. Oh, he sent him back. I thought Asad would make it. Yes, more because Asad thought that Azam won't be able to make it, so that's why he gave it a second thought, and probably rightly so sent Azam Khan back. It's a nice little touch from Azam Khan. Good start. 9 of the first 3 balls. You got to hit those which are meant to be hit. Capitalize. Keep yourself in the race when you're chasing. And we've talked about this. Good news for all cricket lovers, especially in Pakistan. Zimbabwe is touring Pakistan, starting from the 30th of this month. Pulled away slightly uppish. Oh, the timing on that. That raced away to the mid-wicket boundary for 4. Quick feeds from Asad Shafiq. He wasn't that short, but he got into the position very early and pierced that gap between long on and mid-wicket. It's an important period in this game. When the spinners comes on, the life gets a bit easier for the batsman. Swept away once again. Good timing on it. That's another boundary here. He's picking the gaps at will. Yasir Shah expensive in this over. 6-2, 1-4-4. Yeah, wonderful execution of a sweep shot. A slog sweep. And they're cashing in. Probably at the right time. Picking up the momentum. Asad loves to bat against spin. Never mind. Come on, boys. Just 1 wicket, boys. Just 1 wicket. 17 of the first 5. Easy. And make that 18 with that single of the last delivery. Good over this. 64 for 2 after 8.
इस जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल है। 30 अक्टूबर को पहला एक रोज़ा मैच यहीं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। 3 मैचों की यहाँ सीरीज़ खेली जाएगी, जिसके बाद 3 T20 मैचेस होंगे दोनों ही टीमों के माबैन गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट फिर से शुरू हुआ चाहती है। भरपूर सीज़न है यहाँ पर। यहाँ दूसरा रन हासिल किया भरपूर रनिंग के जरिए। कंफर्टेबल लग रहे हैं दोनों। एक रन शॉर्ट हो गया यहाँ पे। अच्छी पार्टनरशिप जा रही है। 14 बॉलों पे 32 रन्स अब तक बना चुके हैं। ये पार्टनरशिप अगर थोड़ी लंबी चली जाती है तो बलूचिस्तान के लिए मुश्किलें क्रिएट कर सकती है। ये दोनों ही बैट्समैन फॉर्म में हैं। आजम खान एक छक्का लगा चुके हैं यासिर शाह को। असद शफीक जिस वक्त ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो ज़्यादा अच्छे बैटिंग रिदम में नहीं लग रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते भी नहीं हैं। टेस्ट मैचों के अलावा इंग्लैंड के दौरे में भी आउट ऑफ फॉर्म लगे थे, लेकिन लगता है कि अब गेंद के बल्ले के मिडल में लग रहा है। बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं असद शफीक। बहुत परफॉर्म करते हैं टेस्ट मैचेस में भी। 1-2 सीरीज़ से अभी नहीं हुआ, बट T20 में भी इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और फील्डर बड़े ज़बरदस्त हैं। सिंध की टीम को पिछला मैच जीतने के बाद काफ़ी हौसला मिला होगा कि रन चेज कैसे किया जाता है यहाँ पिंडी की पिच पर, क्योंकि एक मौके पर इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था। उसके बाद दानिश अजीज़ ने बड़ी आला बैटिंग की। सेम स्ट्रैटेजी नज़र आई सारी टीम्स की तरफ से। शुरू पे नए बॉल पे थोड़ा सा एहतियात से खेल रहे हैं और फिर मिडल ओवर्स में एक्सेलरेट करते हैं। ये भी इसी तरह की पार्टनरशिप जा रही है। और लीडिंग एज गेंद यासिर शाह तक नहीं पहुंच पाई। आज़म खान और असद शफीक की आपस में जो कॉलिंग है वो काफ़ी बेहतर है उसकी निस्बत जो असद शफीक और खुर्रम मंजूर या असद शफीक और शर्जील खान के साथ है। रनिंग बेहतर हुई है आज़म खान की। हम देखते आए हैं मुल्तान से यहाँ तक अपनी फिटनेस पर भी दिन रात काम कर रहे हैं। एफर्ट पूरी लगाते हैं अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए। अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी इन्हें अपनी शॉट सिलेक्शन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमने यही देखा कि सेट होकर आउट हुए। किसी हद तक टेम्परामेंट का भी इशू हो सकता है। पिछले मैच में कैमियो बड़ा अच्छा किया, पर आप सही कह रहे हैं, उसी को अगर इनको मेन क्रिकेट में आना है उसी को ही और लंबा लेके जाएं। 20-30 रन के बजाय अगर उसको 50 में और 60 में कन्वर्ट कर सकें तो बहुत क्रूशल वो रन्स होते हैं मिडिल ऑर्डर के बैटर्स के लिए। जी हाँ, क्योंकि इनमें सलाहियत है कि ये अच्छी गेंद को भी बाउंड्री के बाहर फेंक सकते हैं। इस बार 2 की कॉल है असद शफीक की जानिब से। आजम खान को जल्दी करना पड़ेगी और पहुंच गए अपनी क्रीज में। ये अच्छी चीज़ है इनकी टीम के लिए। जान मारते हैं। 9 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 71 for 2। यासिर 174 रन चाहिए हैं सिंध की टीम को, जिन्होंने 2 विकेट पर 71 रन बना लिए हैं। अभी बड़ा लंबा सफ़र है उनके सामने। सूरत हाल खासी दिलचस्प है और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट गेंद थी और कोई रू रियायत नहीं करते आज़म खान। जब उन्हें विड्थ भी मिले
और लेंथ भी। बड़ी अच्छी क्रिकेट यहाँ पे आजम खान की तरफ पे, 3 फील्डर कट पे मौजूद थे पर गैप में ये शॉट मारा। इम्पॉर्टेंट रन्स। आकिफ जावेद जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं और यासिर शाह को पिछले ओवर में 18 रन आए भी हैं, उसके बावजूद भी अब कैप्टन उनसे बॉल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रन्स भी रोकने ज़रूरी हैं और विकेट भी लेनी ज़रूरी है, और एक मेन बॉलर उनका इंजर्ड होकर बाहर जा चुका है। पिछले ओवर में एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई थी जब अंपायर ने शॉर्ट रन करार दिया। ऐसे शफीक और आजम दौड़ रहे थे। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस ओवर में कि दरअसल हुआ क्या था। ये देखिए ऐसे शफीक, ऐसा लगता है कि अपना बल्ला जो है वो क्रीज में लाने के बाद वापस मुड़े थे। और ये बहुत शानदार शॉट, और ये फलक शिगाफ छक्का लगाया आजम खान ने। और इन दिनों जब ये हिट करते हैं, स्ट्रेट हिट करते हैं। बड़ी अच्छी हिटिंग दिखाई इन्होंने पिछले मैच में, अच्छा फीट यूज़ किया, हेड बहुत स्टेबल था, बॉल पे पहुंचे, ग्रेट एग्जीक्यूशन, डाउन द ग्राउंड, फुल फॉलो थ्रू के साथ, बहुत अच्छी क्रिकेट शॉट। जावेद अख्तर इंक्लोजर तक गेंद को पहुंचाया आजम खान ने। ये देखिए यहाँ पर अपने बल्ले को ये ड्रैग करते हुए ये क्रीज के अंदर लाने में कामयाब हो गए थे। शायद अंपायर की नज़र जो है वहाँ तक पड़ी नहीं, उन्होंने एक रन शॉर्ट करार दिया। अब देखते हैं ये एक रन कितना इम्पोर्टेंट होगा बाय द एंड ऑफ दिस मैच, क्योंकि कई ऐसे मैचेस हैं जिनका फैसला 2 रन के फ़र्क से, 3 रन के फ़र्क से भी हुआ है। ये T20 का ओवर, एक बॉल सिंध के हक में जा रहा है और एक बॉल बलूचिस्तान के हक में जा रहा है। पहले बॉल पे 4 रन, फिर डॉट बॉल, फिर 6 रन, फिर डॉट बॉल। एक और अच्छा शॉट। यासिर शाह ज़्यादा अच्छी लेंथ पर बॉलिंग नहीं कर रहे, शानदार चौका लगाया इस बार आजम खान ने, उनका ये चौथा था। बहुत तेज़ बॉल कर रहे हैं यासिर शाह एक स्पिनर के मुकाबले में मुताबिक, और सिर्फ उनको गैप क्रिएट करना पड़ा आजम खान को, सिर्फ टाइम कर रहे हैं बॉल को बहुत अच्छा। इवन दो कट पे 3 फील्डर हैं पर आउटफील्ड इतना तेज़ है कि थोड़ा सा भी फील्डर से दूर बॉल वो रुक नहीं रहा। थोड़ी सी पेस वेरिएशन करनी पड़ेगी यासिर शाह को यहाँ पर। महंगा ओवर मुकम्मल हुआ यासिर शाह का, जिसमें 14 रन बने, 85 पर 2। रन की पार्टनरशिप सिर्फ 25 गेंदों में बनी और दोनों शाना बशाना खेल रहे हैं। आजम का हिस्सा इसमें 26 रन का रहा है, वैसे शफीक ने 25 स्कोर किया। और ये बहुत ही आसान कैच उमर गुल के पास आया, बिल्कुल दाएं बाएं, उन्हें हिलना भी नहीं पड़ा। राशिद शफीक सेट होने के बाद फिर से आउट हो गए। बड़ी इम्पॉर्टेंट विकेट है इस वक्त बलूचिस्तान के लिए। इमाद बट की बॉल जो टांग पे गई, असद शफीक ने फ्लिक किया लेकिन सीधा उमर गुल के हाथ में, और एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू। 85 for 3।
some. Let him over. सरफराज अहमद पहुंच गए हैं इस वक्त बाजीगाह में। टीम के कप्तान हैं, पहले नंबर 4 पर खेल रहे थे, आज 5वें नंबर पर आए। और बाल बचे, इंडी पर था, इनसाइड एज। अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं माद, बट पिछले ओवर में भी पॉइंट पे एक चांस क्रिएट किया, अभी असद शफीक की विकेट ली। ओवरऑल अंपायरिंग स्टैंडर्ड आज थोड़ा सा एवरेज दिखा, कुछ LBWs, कुछ लेग, कुछ वाइड बॉल्स, और अभी शॉर्ट रन को जो हमने देखा है इसको भी और इम्प्रूव करना होगा अगर हमें अपनी क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना हो। सरफराज के लिए लॉन्ग ऑन के फील्डर इस वक्त बाउंड्री पर हैं। टैप करने के बाद आगे निकल गए थे लेकिन बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। आजम ने बर वक्त वापस भेज दिया अपने कप्तान को। तो अम्माद भट्ट ने जो विकेट हासिल की, हम यहाँ क्रिकेट में देखते हैं अच्छी गेंदों पर चौके लग जाते हैं, आजम अच्छी गेंदों पर छक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन कई बार आपको ख़राब गेंद पर विकेट मिल जाती है। उसी का मुजाहरा था अम्माद बनाम असद शफीक। ऐसे ही है, टांग से नीचे बॉल जा रहा था, फाइन लेग ऊपर था, जो आराम से बाउंड्री की तरफ ये बॉल जा सकता था, बट सॉफ्ट डिसमिसल। इसे बहुत देर से खेलने में कामयाब हुए, बिल्कुल आखिरी मौके पर अपने बल्ले का फेस ओपन किया और 4 रन हासिल किए, अपना अकाउंट भी ओपन किया सरफराज अहमद ने। आजकल इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, इन्हें रन्स की ज़रूरत है। क्रिकेट अवेयरनेस पता है, थर्ड मैन थोड़ा बाहर की तरफ है, बहुत लेट उसको खेला बॉडी के पास से, आउटफील्ड पता है बहुत तेज़ है, तो एक अच्छी रिस्क फ्री क्रिकेट शॉट। अब थर्ड मैन के फील्डर को कहा गया कि आप फाइन आ जाइए, कोशिश यही होगी विकेट टू विकेट बॉलिंग की जाए सरफराज अहमद को। कामयाब ओवर जो विकेट के साथ शुरू हुआ, डॉट डिलीवरी। अभी कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है सिंध की टीम को। 9 रन का रिक्वायर्ड रन रेट है जो कि आराम से पूरा हो सकता है अगर विकेट्स इन हैंड हो। इस ओवर में 4 रन आ चुका है और करंट रन रेट इनका 8.22। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं अम्माद भट्ट। यही मैदान है, उनका होम ग्राउंड है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जहां पर आज बलोचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इमरान भट्ट ने फील्डिंग की, 11वां ओवर मुकम्मल हो गया 90 के मजमूए पर। देखिए सिंध का पलड़ा भारी रहा है, वो कि उनकी विकेटें हैं, एक विकेट ज़्यादा गिरी हुई, लेकिन यहाँ पर उनकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ 3 विकेटें गिरी हैरानकुन तौर पर बलोचिस्तान की। उन्होंने 173 रन बनाए। हालांकि आप ख्याल करते हैं जब आपके पास इतनी विकेटें इंटैक्ट हों तो आपको 200 रन बनाना चाहिए। बलोचिस्तान के स्टेज पे 77 रन्स थे, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। अभी आप अंपायरिंग का जिक्र कर रही थी, मुल्तान का जो मरहला था वहाँ पर भी मिली जुली अंपायरिंग रही। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 14 अंपायर्स को अपनी एलीट फहरिस्त में शामिल किया है। उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं।
ज़रूरी है ये सब क्रिकेट की ओवरऑल स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए इन सब जगह पे इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अच्छा इकदाम है पीसीबी की तरफ से। ज़्यादा लंबा रन अप नहीं है हारिस सुहेल का, बहुत जल्दी अपना ओवर खत्म करते हैं। यहाँ पर जल्दी करनी पड़ेगी और आजम खान ने अपने कप्तान को खुद ही उकसाया और अपनी क्रीज में लगता है कि ये पहुँच पाए हैं या नहीं। हारिस सुहेल को लगता है कि उन्होंने विकेट ले ली है। अगर इसका रिप्ले दिखाया जाए तो बहुत लंबा भागे हैं, सीधी लाइन में नहीं भागे आजम खान। होपफुली इनकी विकेट इंटैक्ट रहे जो कि सिंध के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट काफ़ी क्लोज लगता है ये मामला। थ्रो बहुत अच्छी थी, पिकअप बहुत अच्छा था, राइट एट द बेल्स थ्रो आई और लग रहा है कि ये विकेट चली जाएगी। हारिस सुहेल जितना मुतमिन थे उन्होंने बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं किया और आजम की डाइव यहाँ पर रायगा जाती हुई नज़र आ रही है। देखिए बेल्स उखड़ चुकी हैं, ग्रूव से यहाँ तक निकल चुकी हैं। ये आजम ने खुद ही दूसरा रन लेने का फैसला किया था। सरफराज जो हैं उन्होंने झिझक महसूस की लेकिन आजम भागते चले आए। रनिंग बिटवीन द विकेट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेट लाइन में भागना। आजम खान ने काफ़ी डायगनल रनिंग की जिसमें कम से कम 3-4 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिए उन्होंने और एंड पे एक स्टेप का फ़र्क, थोड़ा सा फ़र्क और बड़ी क्रूशल विकेट ज़ाया हुई यहाँ पे आजम खान की। 92 पर 3। आजम खान वापस चले हैं ड्रेसिंग रूम में, एक मरतबा फिर सेट हो गए थे। जब उम्मीदें बहुत ज़्यादा इनसे वाबस्ता हो जाती हैं उसके बाद ये अपनी विकेट खो देते हैं क्योंकि इब्तदाई दिन है, सीखने के दिन है अभी। ये इनका रन आउट देखें, दूसरी पिच से भाग रहे हैं। अगर यही थोड़ा सा पिछले जब गए हैं ये कीपर की तरफ तो बहुत बाहर निकल गए जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ग्राउंड एरिया कवर करना पड़ा। डाइव एफर्ट पूरी थी, अपनी पूरी कोशिश की पर अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो चुके। यहाँ क्योंकि आजकल T20 के कोचेस ख़ास तौर पर जब वो रनिंग की बात करते हैं तो इस बात पे जोर देते हैं कि आपको सीधा लाइन में भागना चाहिए। जिस लाइन पर आप गए हैं बल्ला लगाकर आप वापस मुड़े हैं वहीं से सीधा आइए। बिल्कुल, और ये 20+ रन्स को अगर ये 50+ में कन्वर्ट कर देते आजम खान तो इजी हो जाता सिंध के लिए। अभी भी ये टारगेट अचीवेबल है, 51 बॉल्स में 81 रन्स चाहिए, बहुत अचीवेबल टारगेट है। बट जिस तरह का विकेट है, अगर विकेट्स जिस तरह का पिच है, अगर विकेट्स कंसिस्टेंटली गिरती रहीं तो मुश्किल हो सकती है। दानिश अजीज़ जो हीरो थे पिछले मैच के सिंध के लिए वो खेलने के लिए आए हैं। सिंध की बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ पाई जाती है। अनवर अली वो अच्छे फिनिशर हैं, हसन खान और सुहेल खान भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये जो बलोचिस्तान की टीम है इसमें आपको T20 स्पेशलिस्ट ज़्यादातर नज़र नहीं आते, लेकिन फिर भी ये अच्छी टीमों में अब शुमार की जाने लगी। ओवर मुकम्मल हो गया 12वां, 95 पर 4।
Fish. Fish, very popular, especially now when the weather is getting a little cooler. But things are not cooling down for Yasir Shah. He's gone for runs. Now Sarfaraz likes to sweep the ball, so he'll have to be careful. He'll have to play most of it against the spin. Huge breakthrough the previous over. In form batsman, looking good, played really good cricket. Azam Khan got run out. Furqan Radnit is keeping up now, 9.53. They have 6 wickets in hand. Sarfaraz is due. He's got to stay with his partner. He's got some big hitters. Danish got the man of the match last evening. Then you have Anwar Ali to come along with Suhail Khan. So you got some big hitters, but Sarfaraz needs to hang around. 45 deliveries, 77 runs. They need to eye a couple of overs somewhere in between where they can get maximum. That's a good shot. Oh, another misfield. Much needed boundary for Sindh. And Danish Aziz played brilliantly yesterday. 59, and that boundary brings up 100 for Sindh. Imad Butt was the fielder there. He covered it well, and then obviously uneven bounce just before Imad. He's not happy with himself, and neither is his skipper. Gone for 37, Yasir Shah in his 2.4 overs. Went for 17 in the first, this time again. Just a single, he's got protection there. He'll probably target Yasir furthermore to get as many as possible against him. With 10 and over required, should be alright if they can get 2 overs somewhere, if they can get those big hits going. Another dot ball. End of the over. 13 gone, 1 or 2 for 4. Gone, 102 for 4. Nicely placed here, Sindh at the moment. Got wickets in hand. Danish Aziz in form, got 59 yesterday, not out, won them a game. And Azam Khan was unlucky today. He looked really good. Couple of big sixes. High-end coordination is really something different from Azam Khan. 27 of just 14. It's tough to say whose hand is that. I think it's Hasnain being treated. Main batsman from Sindh. One thing's for sure, running between the wickets is going to be good. Sarfaraz is quick, so is Danish. So can't afford a run out, Sikandar. Just partnership, 71 of 40. Idea should be reach at least 130 if they can. Not 130, probably be asking too much till 15 overs.
They should be chasing about 60 in last 5 overs, ideally. Balochistan, they scored 66 in the last 5 overs. They had the help of the fielders as well. Can they come back? No. Well, in modern day cricket, as we speak, it's like we were just discussing a while ago. I mean, it is what it is. You got to be very good in all 3 departments. And if you lack in your fielding, not only you're costing your team some runs, you're also taking away that confidence from the bowler. The bowler's a good delivery, he expects 100% from his teammates because it's a team sport. This day and age, if you're an average fielder, you'll be exposed, especially televised games. You can't just hide anymore. I've got a bad news for bad fielders worldwide. You got to work hard on it, guys. There is no other option. Got to bowl that again. But yes, to not to take everything away from Sindh, 3 games on the trot. It's also on a side which is anyway struggling in the field. I suppose the senior players like Khurram Manzoor, Sharjeel Khan, Anwar Ali is one of the best fielders, no doubt. Hassan Khan is also very brilliant. Sohail Khan, Mir Hamza. These guys really have to improve themselves as the fielders, because they might be great players in this format. They might be very consistent with their runs, but in the end, if you're not fielding well, it's no use. That probably is right. It's a televised tournament, properly done, and probably from now onwards we are also televising. PCB is also televising the first class games, so they really realize that they have to lift their fielding, they have to lift their games in every aspect, like you just mentioned, Sikandar. That's good. Good carry there. Nice and full outside the off. Danish Aziz also is one of those players. We saw glimpses of that yesterday. He likes to go hard at the ball, but he's smart at the same time. He knows how to rotate strike. Handy player to have in the middle order. With Sarfaraz around, he knows exactly what he wants from his side. So having your captain so close to you just makes you a better player in this situation. 37 balls, 69 runs. So Danish will keep strike. 14 gone, 106 for 4. So Akif obviously got injured, unfortunately, in his second over. Awasya bowled 1.4 overs, and then Haris has bowled the 4th one, so his overs are covered. So now Umar Gul's got 2 to go. He probably will be really stiff. What a shot. This was firmly hit. Fielder at the boundary had no chance. Yeah, that's what Danish Aziz can do. Out of nowhere, he can produce a shot. Will just go whack like that, and he's taken a liking to Yasir Shah. He's scoring against him. It's going very expensive. They're going to target Yasir Shah in this over. This is the over for them. Make and break. 3.1 overs, 42. He conceded with 13.26 economy rate. Can't even call it economy.
His highest score, I suppose. One mistake, guys. One mistake. So 2 for Gul and 2 for Khurram Shahzad. We got 1 for Ahmad Butt and then this one. That's how I suppose they'll go. Khurram Shahzad is nippy, he's bowling well, and probably, obviously, Umar Gul is very experienced, he's getting wickets as well. He got the breakthrough with the new ball, but he's the bowler they probably will go after. Straight leap. There's a fielder there, will he stop it? No, he won't be able to stop it. Much needed boundary for Sindh. Sarfaraz is really looking good now. He's on 15. Yeah, he hit it that straight. You're always putting mid on, mid off under pressure. Long on, long off rather. Very tough to cut those off. Ease yourself. Yeah. So starting with a boundary, a singular boundaries in 9 of the first 4 balls. Extract another one here. Required run, it is just over 11. Should be a boundary. Yes, it is. Third one in the over. That's well done. That's go-to shot for Sarfaraz. Every time under pressure, he plays that shot beautifully. In front of square. Look at this. There's no fielder there. The sweeper is behind the leg umpire. So 13 runs from the over. 1 more delivery to go. He went for 51, Yasir Shah. Boys, come on, boys. 1 wicket, boys. 1 wicket, guys. 1 wicket. But In the air, is there an opportunity available? No, on the bounce. Wants to come back for the second, taking him on, and the bowler doesn't collect it. So 2 more added to the total. 15 gone. It's 121 for 4. You look at that worm, Sindh is going ahead of Balochistan at this stage. It's only the last 5 overs where Balochistan just skyrockets up. So at this stage, Sindh is good. The 66 runs in the last 5 you mentioned, is that what you see at the end part of that worm? So the most expensive spell from Yasir Shah in his T20 career, 53 in his 4 overs. Economy rate of 13.25. He's not having the best of the tournament. It's always good to be ahead of your opposition when you start comparing where you are at the same stage. You just tend to feel that you're in that comfort zone. But Yasir Shah's 53 in his 4 overs has really puts him back in the chase. There's a sound. There's surely a sound he's been given. So Khurram strikes. Wasn't much carry there. Playing away, trying to make room. That's a big wicket. Danish goes. Huge wicket. At this stage of the game, a dangerous batsman, in-form batsman. Good length from Khurram Shahzad. He's got the breakthrough for his team, and they are really excited. The way he played yesterday, Danish, obviously he was the main man today for Sindh. Now all depends on the skipper himself. He departs for 13, 121 for 5. Hassan Khan.
Good fielder, good batsman, played handy 36 yesterday. Helping the side win. That was the partnership between him and Danish Aziz. 53 of 29, you still go with the batting side. Yes, I would. Sarfaraz is there, one of the most experienced player. The skipper, Anwar Ali, is yet to come, and we see Sohail Khan can hit some sixes as well, mighty blows in the end. He's hitting the right length every time. Khurram Shahzad, very impressive. He's not trying slow ball, he's not bowling Yorkers, he's just hitting back of a length every time. Especially to a new batsman. Such is this format. You get a couple of dot balls going and the required run rate just shoots up. You get one good over, you find yourself right back in the game as a batting unit. What about that trigger movement? Just walking into the shot, coming back for the second, challenging the fielder in the deep, putting pressure on him and achieving the desired result. You have 27. Very good running. Call was straight away 2. And Hassan Khan is really quick between the wickets. He sprinted in and he was home safely. Yeah, you'll have to do that when you're playing with Sarfaraz, because if there's one thing he's really good at is running between the wickets. He hasn't really batted long innings, so he's fresh legs. He'll push you and you can't say no, he's your captain. Awkward length. They're going to settle for one here. Good over so far. Only 3 runs and a wicket. 2 more deliveries to go. Good over this, wicket of the first ball. And a single, a couple in the singles, 4 given in 4 deliveries. And when your opposition requires 11.3, you'd be happy. But important, you've got to finish the over off well. Now, here is the moment where Sindh will eye to get a boundary. In the last 2 balls, at least 1. A butterfly. He just takes Sarfaraz's concentration away. That's so well done by Bismillah. I tell you, that was a 4 on overthrows. Huge save by Bismillah. Pressure back on the Sindh team. 49 of 25. What an over at this stage of the game. Only 3 runs, dot ball and a wicket. .49 of 25, just getting a bit steep here for Sindh. Just a single. What an over this for Khurram. Brilliantly done. And it's 126 for 5. मैच बहुत ही दिलचस्प
मोड़ पर आ गया है सिंध की टीम, जैसा कि इस टूर्नामेंट में पहले भी खेलती आई है। बलूचिस्तान से जब इनका पहले मुकाबला हुआ था मुल्तान में, तो ये 2 रन्स के फ़र्क से पीछे रह गए थे। आज हदफ उससे 6 रन्स कम है। सरफराज अहमद अभी भी मौजूद हैं, उम्मीद की एक रोशन किरण बनकर। लेकिन उमर गुल ये माने हुए बॉलर्स हैं, एक्सपर्ट हैं इन आखिरी ओवर्स को करने के। अभी इनके 2 ओवर्स बाकी रहते हैं। अच्छा स्ट्रोक खेला, लेकिन रन एक ही मिल सकेगा। रिप्लेसमेंट इतनी उम्दा नहीं थी हसन की। बड़ा ही मज़ेदार मैच होने वाला है। 47 रन 23 बॉलों पर 12 की औसत चाहिए सिंध की टीम को, जो कि अचीवेबल है। और सरफराज विकेट पे मौजूद हैं, जो कि खुद बहुत एक्सपीरियंस हैं। हसन खान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली थी कल और मैच जितवाया था अपनी टीम को। ये ख़राब गेंद थी, इसे रवाना कर दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री की जानिब। इस चौके की अशद ज़रूरत थी, ख़ास तौर पर ओवर की इब्तिदा में। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अपनी खोई हुई फॉर्म बहाल करने की कोशिशों में है सरफराज अहमद। बिल्कुल पीछे किया बॉल को, और लाइन भी उसकी लेग साइड की तरफ थी और जब फाइन लेग ऊपर हो तो बहुत आसान हो जाता है बैट्समैन के लिए। बस बल्ला मिलाया और आराम से एक बाउंड्री हासिल की। विकेटें लेना होंगी, कंटेन नहीं कर सकेंगे यहाँ बलूचिस्तान के बॉलर्स इस स्कोर में। विकेट के लिए यॉर्कर फेंका था, सेट हो चुके हैं सरफराज, उन्हें गेंद बेहतर दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा यॉर्कर। एक वक्त था कि उमर गुल इन्हीं यॉर्कर्स की वजह से गुलडोज़र के नाम से जाने जाते थे, और इसी तरह के यॉर्कर्स की और उनके उमर गुल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी बलूचिस्तान को। जी हाँ, बेहतर रिदम में लग रहे हैं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट इनको तकरीबन हर अल्टरनेट पर आराम देती रही। वैसे खेला हवा में और बड़ी अच्छी कोशिश यहाँ पर रायगा गई। अम्माद भट्ट थे जिन्होंने बाउंड्री बचाई, 2 रन तक महदूद किया। देखिए बॉलर ने भी उन्हें दाद दी, हालांकि ऐसे मनाजिर कम देखने को मिलते हैं जब कैच गिरा और बॉलर ताली बजा रहा हो। बिल्कुल कैच ड्रॉप तो ज़रूर हुआ, लेकिन अच्छी कोशिश। जिस तरह के अम्माद भट्ट फील्डर हैं, एक्सपेक्टेशन यही होती है बॉलर की जानिब से कि ये कैच पकड़ लेंगे, लेकिन नाकाम रहे अम्माद भट्ट। और ये अच्छी स्पिरिट उमर गुल की जानिब से। क्या पहुंच सकेंगे? नहीं, थ्रो भी नहीं लगी और अब ओवर थ्रो के रन्स हो गए। बड़ी ड्रामाई सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई। 1 रन भी नहीं शुमार होता अगर थ्रो लग जाती मिड ऑफ से स्टंप्स पर। ज़रा सा बरहम है उमर गुल, इसी पर 3 रन्स बन गए। और बिल्कुल फ्रेम में नहीं थे हसन खान, और बैकअप जो था वो अवैस जा कर रहे थे, और 2 एक्स्ट्रा रन दिए अवैस जा ने। बहुत ही लेज़ी एफर्ट उनकी जानिब से, और इस तरह की क्रंच सिचुएशन में बहुत ही जिसे कहते हैं कि कीमती रन्स हैं ये, और नुकसानदेह साबित होंगे बलूचिस्तान के लिए। और ये शानदार छक्का लगाया। 10 दरख्त पीसीबी और टक की जानिब से सरफराज अहमद के इस छक्के पर लगाए जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म को बहाल करते हुए सरफराज अहमद बहुत शानदार छक्का लगाया। 143 पे 5, 17 ओवर।
3 ओवर्स में यहाँ पर 31 रन की ज़रूरत है और हम देख रहे हैं रवानी सिंध की टीम के साथ है, वही फेवरेट हैं ये मैच जीतने के लिए। और मिड ऑफ के ऊपर से उठा दिया 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार आगाज इस ओवर का किया हसन खान ने और बॉलर को दबाव में ले लिया। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट हसन खान की जानिब से, बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली थी लास्ट मैच में भी इन्होंने, और एक ठप्पा खा के जो है बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। और अपने जिसामत से इतने बड़े हिटर लगते नहीं हैं हसन खान, लेकिन जब शॉट मारते हैं बहुत जान होती है इनकी शॉट में। जी हाँ, शारजा में आपको याद होगा मुत्तहिदा अरब इमारात में इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का एक मैच जितवा दिया था। आखिरी ओवर में छक्का लगाकर अहलियत है और सूझबूझ भी है। एक और शानदार शॉट, इस मरतबा छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया। गेंद स्विंग नहीं कर पा रहे, आगे गिरा रहे हैं। ये भी स्लॉट में थी हसन के। शॉट है यार, बहुत ही जबरदस्त। एक्स्ट्रा कवर पे छक्का लगाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहुत ही जबरदस्त बैट स्विंग थी इनकी और मैच को बिल्कुल अपनी टीम की तरफ करते हुए। अगर यॉर्कर को आप 1 इंच से भी मिस करेंगे तो फिर जाहिर है नतीजा आपके खिलाफ जाएगा। खुर्रम को इसका अंदाज़ा हो जाना चाहिए। 150 रन भी मुकम्मल हुए सिंध की टीम के। 16 गेंदों में अब 21 रन की ज़रूरत। इक्वेशन और ज़्यादा आसान हो गई। इस बार रफ्तार बिल्कुल नहीं दी, पहले अपना बल्ला घुमा बैठे थे, लेकिन सरफराज अहमद ने बहुत चालाकी के साथ ये रन बना लिया और स्ट्राइक भी हासिल कर लिया। हसन खान ने जो प्रेशर है सरफराज से बिल्कुल ऑफ कर दिया है। एक सिंपल सी अब इक्वेशन है सिंध के लिए, सिर्फ 20 रन दरकार हैं 15 गेंदों में, और जिस तरीके से ये दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं बिल्कुल भी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए इस रोज स्कोर को अचीव करते हुए। दबाव में बॉलिंग कर रहे हैं और अब विकेट की दूसरी तरफ गेंद फेंका, बाल बचे। ये छक्का लग सकता था इनको। बिल्कुल ही जो एंगल है वो उनका लेग साइड की तरफ चला गया और मेरा ख्याल सरफराज की रीच से बिल्कुल ही बाहर हो गया। शानदार बैटिंग का मुजाहरा सरफराज ने इस बार नहायत आला अंदाज में खेला। बॉलर के सर के ऊपर से ये सबसे महफूज शॉट समझा जाता है क्रिकेट के खेल में। बहुत ज़बरदस्त टाइम किया है आज सरफराज ने बॉल को, और ये भी शॉट बहुत ही खूबसूरत। इससे ज़्यादा अच्छा गैप पूरे ग्राउंड में कहीं नहीं होता। जो बॉलर के ऊपर से जब शॉट लगता है तो वहाँ आप कोई भी फील्डर जो है नहीं रखते। सेफेस्ट शॉट। सरफराज को अंदाज़ा हो गया है कि बॉलर दबाव में है, ज़्यादा से ज़्यादा रन इसी ओवर में बना लिए जाएं। इस मरतबा गेंद खाली गई। इस मैच में हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बार इस मुकाबले ने यू टर्न लिया है। थर्ड मैन भी ऊपर था और सरफराज पोजीशन में भी आगे थे, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। हल्का सा अगर ये बॉल बल्ले को छूती तो पलक झपकते हुए गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाती। विकेट की ज़रूरत है बलोचिस्तान को। सरफराज ने एक और बड़ा उम्दा स्ट्रोक खेला, एक और चौका। इस ओवर में पांसा पलट दिया सरफराज अहमद और उनके पार्टनर हसन खान ने।
163 पर 5। देखिए रन बॉल से भी नीचे अब मामला आ गया है सिंध के लिए, और अब तो उनको यहाँ से बहुत ख़राब खेलना होगा ये मैच हारने के लिए। बहुत अच्छी पोजीशन है। सरफराज अहमद ने कैंट को आज संभाले रखा मुश्किल से, हालांकि उनकी टीम 2-4 थी। वो मैच को डीप लेकर गए जहाँ पर उनके फिनिशर आकर अच्छा खेल सकें, और वही किया हसन खान ने। तो उमर गुल से पहले लाया गया यहाँ अम्बाद भट्ट को, और उन्हें पहली गेंद पर ये वार सहना पड़ा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इसे स्लाइस कर दिया कवर पॉइंट की यानी 4 रन के लिए हसन ने। हसन खान के बैट से गेंद गोली की तरह निकल रहा है आज, और एक और स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट फुल था, वाइड था, लेकिन बैट स्विंग बहुत अच्छी है इनकी। अच्छा, और जो फॉलो थ्रू है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। उनका बल्ला जो है वो बाएं कंधे के ऊपर जाकर फिनिश कर रहा है। इससे पता चलता है कितना ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं जब ये स्ट्रोक खेलते हैं। फुल टॉस, इस बार फिर रन्स मिलेंगे। गेंद आहिस्ता आहिस्ता चली है बाउंड्री लाइन की जानिब, और 3 रन हासिल करेंगे सरफराज अहमद। वो पहुंच गए डेंजर एंड की जानिब। आहिस्ता आहिस्ता बलोचिस्तान के प्लेयर दिल छोड़ते हुए, फुल टॉस बॉल, और फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं। दोनों खिलाड़ी अजहर इस वक्त आखिरी ओवर में मैच ले जाने के मूड में नहीं लगते, वो यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। हारिस सुहेल जो हैं थर्ड मैन के फील्डर को उन्होंने इशारा किया कि आप ज़रा वाइड हो जाइए। 2 रन की आवाज़ लगाई और फिर मना कर दिया हसन खान को सरफराज ने। सरफराज जब फॉर्म में वापस आते हैं और जिस तरीके से आज खेले हैं, बहुत ही अच्छा साइन है उनके लिए भी और उनकी टीम के लिए भी। जिस तरीके से वो विकेट के दरमियान भाग रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने पार्टनर को खिला रहे हैं, ये रोल होता है सीनियर प्लेयर का, और जब वो फॉर्म में हो तो टीम के लिए बहुत अच्छा है। 50 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल हुई दोनों बैट्समैनों की जानिब से। यहाँ बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप, क्योंकि इन दोनों ने जब खेलना शुरू किया था सिंध की टीम मुश्किल में थी 5 विकेट गिरने के बाद। अच्छा टेम्परामेंट दिखाया है, सूझबूझ के साथ रनिंग की है, और अब बिल्कुल अपनी टीम को हम कह सकते हैं कि जीत के करीब कर दिया है, 1 कदम के फासले पर। सरफराज पे मैं वापस आऊँगा। ऐसे प्लेयर को सिर्फ एक इनिंग चाहिए होती है, जब वो उस मुश्किल पीरियड से निकलता है तो फिर वो तमाम यादें, उसकी तमाम जो उसकी मेमोरी होती है, किस तरीके से रन बनाने हैं, वो वापस आ जाती है। तो क्या आज छक्का लगाकर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करेंगे और अपनी टीम को जीत से हमकनार। और खेला सीधा मिड विकेट पर खड़े हुए फील्डर के हाथों में। अब्दुल रहमान ने वहां पर कैच लिया, अकबर रहमान ने राधा। सरफराज अहमद जब उनकी टीम को सिर्फ एक स्ट्रोक चाहिए था, वो फुल टॉस पर आउट हो गए, गेंद को सही प्लेस नहीं कर सके। ज़्यादा ही अच्छा टाइम कर गए, बॉल को इतना ज़ोर से वो खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग सरफराज अहमद की जानिब से। 44 रन उन्होंने बनाए और सिर्फ 2 रन अब रह गए। 172 पे 6 आउट।
7 गेंदें बाकी रह गई हैं, सिर्फ 2 रन की ज़रूरत है सिंध की टीम को। ऑलराउंडर अनवर अली पहुंच गए हैं लेकिन नॉन स्ट्राइकर हैं। एक ही रन बन सकेगा। दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया। 19वां ओवर मुकम्मल होने पर 173 पर 6 सिंध। और ये रहा वो रन। सिंध की टीम ने 4 विकेटों से हरा दिया है बलूचिस्तान को। पहली मरतबा उन्होंने नेशनल T20 कप की तारीख में बलूचिस्तान के खिलाफ को मैच जीता है, इसलिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है ये टीम। इनके हेड कोच बासित अली, राशिद खान जो टीम मैनेजर हैं, और सबसे बढ़कर सरफराज अहमद जिन्होंने इस कामयाबी की राह हमवार की। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस सिंध की जानिब से, और आखिर में बड़ी आसानी से इस रन जो टारगेट था उसको चेज़ किया। स्टार्ट कुछ इतना पुरएतमाद नहीं था उनका, लेकिन मिडल ऑर्डर में और लेट मिडल ऑर्डर में बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की सरफराज ने, पहले आज़म खान ने, फिर हसन खान ने, तो मैच को फिनिश करने में कामयाब रहे। और बलूचिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद कुछ जो गलतियां थी इस मैच में उन्होंने की, और वो ये मैच हारे। यहाँ से शफीक की वापसी भी अच्छा शगुन साबित हुई, और आज इनके बॉलर्स जो थे वो एतमाद पर पूरा उतरे। सरफराज अहमद अहम टॉस भी जीत गए थे। शब के मैचों में हमने यही देखा है कि कप्तान पहले फील्डिंग करना पसंद करते हैं। हारिस सुहेल को इस बात का एहसास हो चुका होगा कि खिलाड़ियों ने कतरे स्लो बैटिंग का मुजाहरा किया, विकेटें बचाने को तरजीह दी। आपको सीखने को मिलता है हर क्रिकेट मैच के बाद। बलूचिस्तान का देखा गया कि थोड़ा सा जब बैटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप ले जाते हैं, और जिस टाइम पे शायद रन रेट को जल्दी बढ़ाना चाहिए, जो कि विकेट थोड़ा सा स्टार्ट में तंग ज़रूर करता है, लेकिन आपको फिर भी T20 क्रिकेट में एक टाइम पे आके रिस्क लेने पड़ते हैं ताकि आपको मोमेंटम गेन रहे। T20 को इट्स ऑल अबाउट कीप द स्कोरबोर्ड मूविंग। जहाँ तक सिंध की बैटिंग का ताल्लुक है, शर्जील खान ओपनिंग करने के लिए आए थे खुरम मंजूर के साथ। खुरम मंजूर बगैर को रन मंगाए गए। शर्जील भी अच्छी इनिंग्स नहीं खेल सके। रशीद शफीक और आज़म खान ने मिडिल ओवर्स में टीम को संभाला देने की कोशिश की। आज़म खान जब रन आउट हुए तो लगता था कि ये टर्निंग पॉइंट होगा, लेकिन सरफराज अहमद ने सूरत हाल को ज़्यादा बिगड़ने नहीं दिया, और आखिर में हसन खान ने अच्छा हाथ दिखाया 28 रन के साथ। बहुत अच्छा स्टार्ट किया था बलूचिस्तान ने, लेकिन एंड पे आके जो आखिरी 4 से 5 ओवर में बिल्कुल अच्छा नहीं किया। यासिर शाह, ये 4 ओवर हैं जिसमें 53 रन बने। आई थिंक ये जो बहुत महंगे साबित हुए, और इन दी एंड जो डिफरेंस रहा वो यही रहा कि यासिर शाह के ओवर्स में बहुत ज़्यादा रन बने। उसके अलावा देखा जाए कंपैरेटिवली बाकी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, सिर्फ आखिरी 2 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स को जो है वो ज़्यादा रन पड़े, और जो अंडर प्रेशर बॉलिंग करनी पड़ी उनको, खुरम शहजाद को या उमर गुल को, वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। टॉस जीता सरफराज अहमद ने बलूचिस्तान को। उन्होंने पहले बैटिंग करने की दावत दी। 173 रन बनाए बलूचिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पर। इमामुल हक ने 20 ओवर्स खेलने के बाद 92 रन की इनिंग्स खेली, और अब
अब्दुल वाहिद जो नौजवान हैं, उन्होंने 32 रन बनाए। हसन खान, सुहेल खान और अनवर अली ने एक एक विकेट हासिल की। और जवाब में सिंध की टीम ने जब उनकी 6 विकेटें और 5 गेंदें बाकी थीं तो मैदान मार लिया। यहाँ पर एक वक्फा आने को है, जिसके बाद देखिएगा मैन ऑफ द मैच की तकरीर।